anatomy of the scope, right? So basically, whether this is a side viewing duodenoscope, you who have used it would know that, right? इसमें जो main जो चीजें हैं, एक तो ये है कि it has got the lens and the biopsy channels on the side, not at the end. So whenever I teach my registrar, I always tell them that it's like learning to drive a car, watching through your side window, not through the front windscreen, right? It's always a different orientation when you are going through the various structures, right? So first of all, you need to familiarize yourself with the scope. That's the big wheel and the small wheel. Big wheel is for up and down movements, and the small wheel is for right and left deflection, right? Okay. So इसमें जो vast चीजें जो हम standard use करते हैं कि up, down means कि when you up का मतलब है कि putting the tip of the scope up, which means that pulling the wheel down. When you pull that down, the tip will go up, right? And again, it is the dial left or dial right. So normally, those are when this is in this position, that is unlocked, it's free to move. Same for this one. When you put it here, it becomes locked, right? Similarly, इसको lock, right? हाँ, ये lock है, ये unlocked है. Normally, whenever you are scoping somebody, you always go in the unlocked position so that the tip is free to move, right? Then that is your biopsy channel through which, actually in ERCP we rarely take biopsies. We do sometime, but it is mainly your instrumentation channel, right? So it will, and then more importantly, there is the bridge. So whenever we talk about bridge up, it means the moving the cannula or the accessory up. Bridge, moving the cannula or accessory down, right? The actual movement on the bridge is exactly the opposite. Bridge up means bringing the bridge down, right? And bridge down means up, right? So always, so you use it to what you actually see on the accessory. Bridge up, bridge down, okay? So that's how you start off. The reason it's a side viewing scope is because if you remember, if you do an OGD with a front wing endoscope or a standard gastroscopy, you cannot get a good view of the papilla. So when you use the side viewing scope, you actually look the papilla straight on the face, or in French they call it en face. And that's what you aim for, that you should be straight. As you know, I said in my lecture, and as Dr. Khalid very elegantly put it, you should not touch any accessories till you are really en face with the papilla. Trying to probe and trying to get in from an awkward position is impossible, so forget about it. And the more you hit the papilla each time, the more difficult it becomes for you, because the papilla becomes tense and edematous, and the more it becomes edematous, the cannula, the bile ducts become smaller and it becomes more difficult. So the papilla, when the papilla get tense, you get tense, and it doesn't work, right? So always, whenever you are going to, I always tell people that the first attempt is the best attempt to cannulate. So when you are about to attempt, make sure that it is the right time to do it, right? So just to familiarize it, you normally hold up the scope like that. Always make sure that the patient is comfortable, and one of the ways to ensure comfort is not to inflate the duodenum too much. So do not keep your finger on the inflation button all the time. Keep it away from there, because the more you inflate, you wouldn't see it being inflated because it's an open channel. The air will keep going down into the intestine, even to the colon, and the patient will become more and more distended. So always resist the temptation of putting your finger there. Keep it away from it if it's not needed, right? And so that's your duodenoscope basically, right? Secondly, when you are cleaning scopes, you should remember that there is a channel associated with the bridge, and that's why your staff members who are dealing with cleaning should clean that channel as well, because if they are not aware of it, you can get infection transmitted to that as well.
Position of the patient for ERCP is always it should be in such a way that the patient is safe, the approach is good for you, and the final position of the papilla is optimal. The best position is arm behind the back and the patient lying semi-prone, right? When you are actually intubating the patient, we keep them side up a bit more. I mean, they're in the semi-prone position. When you get into the duodenum, then it is, you can lie them almost completely prone. I tend to just leave them the way they are because it doesn't really matter, but some people prefer to do it. So generally, the arm should be out of the way and it should be behind. Whenever we ask the patient, I always tell them that, as if you are being arrested. So, the arm behind them. So when they are lying on their face, with NOGD, you just lie them like that. But if you do that, you can't lie them totally prone if you need to. And secondly, the arm will get in the way of your screening. So your big, humerus or radius will come in the way. So to avoid that, you put them in that position. Sometimes if it is a difficult situation, like you've got a J-shaped stomach or a big hiatus hernia, then it's better to keep them propped up on their side. And once you are through the pylorus, then you can put them in the semi-prone position, right? Normally, for sedation, we'll discuss that, but you give them a combination of a painkiller, which is either a pethidine or fentanyl or whatever we use here, benzodiazepine, which we usually, most of us use midazolam. Some people use propofol anesthesia, but then you should have an anesthetist with you. I use a combination of midazolam and fentanyl. We use buscopan to paralyze the duodenum. If you are good at it, I normally give the buscopan at the time we give sedation. But if you have difficulty traversing the stomach, then the recommendation is that you give buscopan when you get into the duodenum. It will take about a minute or so for it to work. If your visibility is not good, I strongly recommend that you use Infacol spray, because it will break up the bubbles for you, and because you need to have a good visual on the papilla to cannulate. Otherwise, if you are, you saw very elegantly in the presentation by Dr. Khalid that it was always, you could actually see the orifice. And sometimes with the certain, cannulation, you just have to wait for the right moment, especially when it's moving with respiration. So try not to probe it unnecessarily, or till you capture it and then go, right? So with the scope, इसको थोड़ा सा वो लगा देते हैं, अच्छा ये lubricant, हाँ जी. It's always a bit of a struggle with this one because it's not really fit for purpose, but that's as close as we could get to the real thing, right? I think the colonus. Right. Acha. Let's see. Normally, when you are doing an OGD intubation, you always do it under direct vision. With ERCP, it's not always possible because you've got a side viewing scope. So rather than mess about or start twiddling the knobs or whatever, I just ask them to keep it on a gentle curve, pass it over the tongue and to the back of the scope like that, and the scope will go down usually very easily, much easier than the gastroscope because it's got a rounded end at the end, right? It's quite rounded. A gastroscope is cut off like that, so it's more difficult to RCP. Easier to intubate. You just have to be gentle and careful, right? Okay. So you do it. You watch your thing and pass on. Exactly what we don't want. Right, okay? So you go down. See?
Right, okay. Generally, stomach, when you get into the stomach, it's always a bit tough here. Usually with most of the trainees I find, when they are in the stomach, they go like that. Right? It's typical. चाहे वो ट्रेनी पाकिस्तान से हो, वो अमेरिका से हो, या इंग्लैंड से हो, या सऊदी अरब से हो, they all have a tendency to go like that. That's what you shouldn't do. When you go, look at the rugae, the folds of the stomach, and just follow that. And the other thing is, when you are traversing the stomach, bear right. So when you bear right, you will and follow the rugae, you will मतलब राइट की तरफ जाएं. ठीक है, जो आपका जो वो है ना, अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ ना, I've entered the stomach. अच्छा, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता स्टमक में घुस गए कि नहीं घुसे. जनरल रफ गाइड इज 40 सेंटीमीटर से जब पहुंच जाओ तो वो स्टमक आ ही जाता है. ठीक है, तो ये यूजुअल पोजीशन जो है ना आपकी, आप लोग सब जो है तो आप ऐसे जाते हो सीधा. यू स्टार्ट लुकिंग एट द फंडस व्हिच इज नॉट द वे टू डू इट. सो जस्ट रिलैक्स, बेयर राइट, और फोल्ड्स जो रूगा है ना स्टमक के, तो उसको फॉलो करें तो यू विल गेट. थोड़ा सा इसमें और लगाना पड़ेगा. हाँ, जेल लगाना होगा. ठीक है, हाँ इनिशियली हाँ उधर पहले भी बल्कि हाँ वही होता था. हाँ हाँ हाँ, वायर एक्सचेंज वगैरह जो करते हैं ना, थोड़ा सा इसमें. जी कैसे? नहीं नहीं, वो इधर फिजिकली वो है इस वो. that's the pylorus we are looking at. ठीक है, तो नॉर्मली मैं इसको थोड़ा सा वही that's a bit stiff. Yes, yeah. You have a very अच्छा, नॉर्मली टू क्रॉस द पायलोरस इज, क्योंकि आप साइड व्यू कर रहे हैं ना, तो द पायलोरस शुड लुक लाइक अ सेटिंग सन टू यू. तो जैसे सूरज गुरूब होता है ना, उसी तरह द मोमेंट इट लुक्स लाइक अ सेटिंग सन, आप थोड़ा सा इसको पॉइंट अप करते हो तो यू विल गो थ्रू द पायलोरस. क्या? लेट ऑफ हो. अच्छा, यार ये पहले भी इसका मसला रहता था. वही ना. हाँ हाँ, वो ये होता है कि शुरू में इट डज, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम कर रहे थे तो इट वाज डिफिकल्ट टू गेट इट वर्किंग स्ट्रेट. हाँ, सपोर्ट या difficult bit in this. Once हाँ, you actually pass yeah, into the yeah, with a bit of support. bit of support, Yeah. you just get in once, and then once you get in, then you I find it most useful for them to बेसिकली उसके लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए. implementation so you don't have to practice chanting and all that. हाँ, या
I think we are reasonable, well, as reasonable as one can We get. assume that according to the back, to be honest, I think manipulate किया था, हाँ, which that's helped. shorten and then हाँ. एक मिनट, let me put a better form. So last time actually we position that we हाँ. Yeah, that's it, right. Right. Yeah, that's better. ठीक है? So this is normally to achieve this position, आप इसको right lock में कर देते हैं, बिल्कुल extreme right way, and you move your body across it with, because if it's in a short scope position, the scope tip will move with each movement you make. Even when you breathe, it will move, right? For the final go at it, आप थोड़ा सा left dial करते हो. By normal extreme उसमें right, then you do a bit of left, and you can move your scope as well, which will reflect more, right? अच्छा, इसमें कुछ movements आपने याद रखनी है. एक जब भी आप up and down wheel use करते हैं, तो when you move up, the papilla will get closer to you, right? That's something which you need to remember for adjusting your final position. When you move down, it will move away from you. When you push the scope out, it will get closer to you. When you push the scope in, it will move away from you. ये चीजें आपने, मतलब this should be drummed into your head. और बाकी पिलिया के, So if you look at it, there are three ways of bringing bringing the scope close to you. You can go towards it. This is the standard thing you're all big wheel brings it close. When you're putting your stents, and we'll discuss this, I think that is a very, very useful maneuver. I try and use less of elevator. You have a single scope. Where they come from, you don't have any scopes that are more than 2 years old, right? yes, yeah. They have, most of the centers I know have a 1-year contract, and every 1 They year, get, I know Mass General, they change everything every year. End of the year, the scope gets replaced. They have many scopes and no issues. If you're working in a place which has 1 or 2 scopes, one of the things that is very important is not to put too much pressure on your arms, especially the elevator. You have a difficult stricture, you can't get through. I think you have single scope, you put a 7 French stent and ask them to go to another center. You've done your job. Okay? But if you try and use too much of elevator and too much of these pressures, you're going to break either most likely the elevator will go. Elevator goes, you stop functioning. So you have to choose. These are things that are not, and you're not going to be told in courses. These are practical things. You have 1 or 2 scopes, you need to be very careful with it. It's not necessary to put stents in every case. You put a 10 French, it's different, 7 French is different. You're really struggling, or put a 7 French, save your scope, let somebody else mess his scope on, who has more scopes. So I think that's one thing that's important. But you use the big wheel to put stents or to bring the ampulla, to advance the cannula in. We saw there are different techniques. That's what you're saying. This should be in your mind. You should know. You want to bring the ampulla close, pull back the scope, it comes back close to you. Elevator up, comes back to you. That's what Dr. Wakar has very nicely shown. If you understand these movements, then it would be much easier. And remember, what is very important is, happens with all of us, you leave the scope in very good position, you give it to your junior, and the ampulla is everything gone. goes. Yeah. Right? And he is struggling, and in that struggling, he's trying to push the scope, advance the scope, do this, and he's messed it up. You come back, all you do is you just turn yourself and say, here it was. Yeah. So what you need to understand is these movements in ERCP are very, very important. This will completely change everything. This is a dummy. It will only give you a conceptual thing. But in real life patients, the ampulla, if Wakar moves like this, the ampulla will move. Yeah. See? And so that is what happens. When we give you the scope, the orientation has changed and you're wondering what the hell, he had such good... The other thing which I usually find very irritating with my registrar and trainees is,
when they are trying to do something, they try to do it like this. And that is usually very irritating. Because this should be, once you achieve your position, this should be rock solid. Because the moment they will try to do it like that, and that is, where you lose your position. So once you achieve your position, that should be there. And I even tell them to stop breathing because, that is it. That stays solid. Everything else should be done with your other hand. If you see a person doing any endoscopic procedure and trying to do this, you know they've messed up. either don't know or they're seriously stuck. Yeah. You're most likely the former. Because once you've got your position, you really need to be in a very comfortable position. It's important to have the right bed level for your height, and be very careful with your back. I have destroyed my back doing these procedures. When I started doing them, it was different days. Now it's totally different. We didn't have this realization about backs. Neither was I bothered. At that time, I just wanted to do. I wanted to come back. Yeah. You are young and energetic. You're young and you don't think about it. And so I think radiation exposure is important. Back protection is very important. Don't get too excited, and just because you want to do it, don't compromise on your bed levels and all that. And the other thing is, like, if you look at the scope, if scope is like this, you can't rotate it. Scope has to be straight. Nice and straight. Nice and straight. For some people, they can stay close to the patient and still their scope will be straight. Yeah. People like me, you have to step back to keep the scope straight. Otherwise, like it's if you do this, it's not going to it wouldn't be translated. It doesn't work. Like your purpose of any movement you do here should be transmitted over there. Anything you do here, it needs to be transmitted over there. And if you are very close, nothing is happening. Your far scope is straight, see how the things get transmitted. For sure people like me, away from the patient. And your scope very straight. And have a perfect height, like what a comfortable height for you. And you're going to do a lot of these procedures, you're going to just have a lot of strain on your body. So we want to I think the other important thing is, which I always tell whether you are examining patients, whether you're doing any procedure, is that you should be in the most comfortable position. It is whenever, it was used to be Mercedes-Benz when they used to advertise their car, that engineered like no other car in the world. And they would actually show that in the assembly line, the car tilts toward the engineer, not the engineer tilting toward the car. So the engineer performs his work in the best possible position he has. The car has to turn for him. So that's how you should be doing it. Secondly, this is a procedure which is complex, it is high tech, it can be tedious. And sometimes the guide wire is going to slip through, sometimes you might have difficulty in cannulation. The main thing is to stay calm. Because the moment you start panicking, the moment you start getting angry, you can't get your cannulation done, you can't get the work done, and the whole team gets panicky as well, and they can't perform. So always keep calm when you are in a tight situation. Whether it's a bleeder, whether it's difficult cannulation, or whether a guide wire slips through a difficult stricture, which we have spent quite a long time to get through that stricture, and because these things can happen. So one of the things that I've learned when you enter the stomach, what I was trying to show here with the dummy obviously not here, is that when you enter the stomach, you have to go here. And what happens is your tendency is just advancing. I'm sure, yes, I'm pretty sure both of them do the same thing. As soon as you pass the gastroesophageal junction and down to the stomach, it's time to just gently take. You'll see that the gastric goes literally like right. it literally guides you most of the time. You never see yourself struggle, go back. Patient is doing, especially if it's a sedated patient, is under propofol, and you pray to God that you haven't actually stretched the stomach too much. But that is a very important movement. We'll try and show it to you. That makes it very easy to reach, to get that sunset sign. And once you've got that, then it's a piece of cake going and reducing the scope. It's very important to learn to reduce the scope. Whether it's colonoscopy, whatever you're doing, you should not fear. Or the fact that you've reached a place once, you will go back again. And ERCP scope reduction is very, very simple. Should be done slowly, doesn't have to be done too fast, gently, and movements are very simple that Prakash just explained. So that
you need to just, try and improve on everything. Are you getting straight into the sunset sign? Are you passing into the pylorus, reaching the pylorus? Is the patient very uncomfortable? Are you taking too much time, putting too much air? All those things you need to work on. You pass it through the pylorus, great. Reduction of the scope, great. Positioning of the ampulla, the ultimate thing. All these, but these are all part. You put too much air, you make life difficult for yourself. You've already got a wrong start for the patient. He's jumping up and down. The simple procedure has now become difficult. You failed not because the patient was difficult. You failed because you actually made him so uncomfortable or her that she was jumping unless you're doing it under propofol. So, all these steps that Waqar and we are going to take you through, they may be repetitive, but that's all we do. There's nothing special other than what we have just discussed. Engage the papilla position is also important. I mean, I'm trying to get it best here as I can under the constraints of but it should be toward the top of your field so that when the cannula comes out and is bowed up, it goes straight for your papilla, right? So now the hands-on people, if you start coming around. Those who are observers, tendency is when you are observing, you all are looking at the papilla screen. If there is a camera which can show the position of the endoscopist, the movement we make, pay more attention to that. People keep looking at the screen and just be back and forth, especially those who are observing. And it's very important because you see papilla, everything looks fine, while some of us are joining, but you don't know what movements were taken. That's very important. Right, okay. नहीं निकालें नहीं इधर वो करें क्योंकि फिर डालना मुश्किल होगा दोबारा ठीक है तो इस पे मतलब इसको थोड़ा सा हैव अ फील अराउंड फॉर वी कैन स्टार्ट वो कैनुलास वगैरह हो तो दे कैन स्टार्ट इवन यूजुअली जरा टॉप पे होना चाहिए ऊपर होना चाहिए ठीक है ना क्योंकि तो almost is there. It should be a bit more toward the top of the field. लेकिन it doesn't really matter. वो आप खुद ब खुद ही फिर यहाँ पे generally 12 o'clock position पे हो तो it will do all right for you. हाँ. अब ये जो है ना ये सही position है इसके लिए cannulation के लिए ना ठीक है. You are never too close. थोड़ा सा close आ भी जाए तो आप ये इसको नीचे कर देना wheel को up and down ना. It will take it, sorry इस तरह नीचे कर देते, it will take it away. ऊपर इसको आप करेंगे ना तो it will bring it closer, ठीक है ना? और अगर आप स्कोप अंदर करेंगे तो it will push it away from you. स्कोप अंदर पुश करेंगे और अगर आप स्कोप बाहर खींचेंगे तो it will bring it closer to you, ठीक है? ये जो मैनूवर्स हैं जो डॉक्टर बता रहा था इनको आपने स्टेप करने हैं what happens when you do up, what happens when you do ये बिल्कुल आपका सिस्टम जैसे गाड़ी चलाते हैं ना आप you shouldn't be thinking about it ना. Why is it locked? Only the small wheel. Why is it locked? You don't have to. Sometimes you can. Most people, urine reduction. ज़रूरी नहीं होता मतलब बाद लोग करते हैं बाद नहीं करते. You can lock it. Then leave it. अनलॉक में ये फायदा होता है कि आपको थोड़ी फाइन जो मूवमेंट होती है ना. Right left is very important when you are cannulating. Right left becomes very important. Okay, so first you lock the small When wheel. you've done the reduction, Unlock. And you are always afraid to fall back into the stomach. That's why you lock it. That's why people lock it. Because they're afraid they're going to fall back. But if your position of the scope is correct, you don't need to lock. I think this is wrong position of the scope for ERCP. It has to be located a little bit to the. It has to be like here, with one holding it, and I'm in here. This is not the position of the ERCP. It has to be changed a little.
look at the movement. It will give you a movement too. But if your scope is like this a little bit, it kind of just holds on to a hugs on apex. So it doesn't fall back. People are afraid they want to lock it because they're afraid they're going to fall back. So, but you have to get into a habit of not locking the small tool. And then after that, try to keep this hand free for accessories. Make your thumb strong, make your fingers strong. You have to be able to do everything, even with the lock wheel. Even if they are locked, you should be able to, if you have a strong thumb, you should be able to move those without using knotting. That's very important. Try to practice it like with the big wheel away from you, towards you, small wheel towards you, away from you, what that changes. Just And also this, what you do. Yeah. You see this. Okay, this is how you are going to home in on the puppet. The rotation that you do of the scope Yeah. actually changes the position. either it's a wrist or your shoulders. Yeah, you cannot just hold the scope there and move your shoulders. That's not going to happen. Nothing. So you have to either Move the release whole- your the whole. wrist and let it move with your shoulders, or just use the wrist. Because if you're relaxed here and you do this, you can literally know, you can see what your scope is doing. Yeah. And that's a movement that's very useful. You can get Subtle changes in that. और scope को हमेशा straight रखें. Try to keep it straight. और force every movement you do with your shoulder or hand, or it to be transmitted to the hand. Scope has to be straight. Right. Scope, nothing is going to go to the end if scope is not straight. That's why I keep stressing, if you're short, step away from the patient. If it's the tall people like them, they can stand close and still there is a lot of like scope. Scope going in. I think it's very, very important. And that's the principle of endoscopy. Scope should be straight, no matter what you're doing. Okay. So you can have a cannula now. Yeah. so- हाँ जी. देखो ना. Some of the things are very important. You need to discuss it with your technician. So Shahid, you're starting your practice, you have techs who are not, it's very, it would be nice if you can send one of your techs here, and they can spend a week or 2 weeks. With I think that would be very important. That would be very helpful for you. But you have to, your tech, and you have to have an understanding about what advancing is, what pushing the wire means, or injecting, how much do they inject. All this has to be very clear. दूसरा- If you're using a wire withdrawal, stent placement thing, you need to have a very coordinated thing, and you can't operate on your own. But if you don't understand the language of each other, then you can have disaster. दूसरा हमेशा I always give the example of cricket. जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो you watch the ball, not the bat. जब भी आप स्ट्रोक मारते हैं तो आप बॉल को देख रहे होते हैं. तो इसमें भी हमेशा your eyes should be glued on the screen. क्योंकि अगर आप एक्सेसरीज या वो चेंज कर रहे हैं ना, तो आप उसको ना देखें. The moment he looked at it ना, जब वो डालने लगे, तो the papilla moved. So this is a very wrong position. Exactly. Yeah, it's a big hole. Anything You do, able to it go will through. in there. But that's the And this is the normal tendency. normal. You see the ampulla, you want to go in. Yeah, Yes. yeah. And that is what we are saying. अब उसको अपने आप को एडजस्ट करें. हाँ. Yeah, this You're a will bit too get close. available to you. हाँ. Small way to The other way. You see what it does? Small wheel, you just saw. Yeah. Small wheel is very important. If you're locking it, you're missing अच्छा, this. दूसरा जो है ना, आप जब हाँ, you're a bit far, yeah, that's better. Yeah. Whenever you are taking your accessories down the channel, keep your bridge locked. उसमें ये होता है कि अक्सर लोगों को देखा है वो डाल रहे थे, when they realize the cannula is in the jejunum somewhere, तो जब आपका वो bridge lock होता है तो आपको पता लग जाता है कि when the peak is there ना. Otherwise, if you are experienced, you would know when it is reached. हाँ. इधर से हाँ इधर से निकाल भी सकते हैं आप. For what you do is इसको force से भी उससे पकड़ के ना. No, you need to pass a wire. हाँ वही जो हाँ वो ऐसा सॉरी वो वायर है नहीं.
on the dummy, what you need to do, each one of you, you need to understand the role of big wheel, small wheel, shoulder movement, and pull and push. These are the movements that we have. There is nothing else you can do. If you understand these 4 movements, that's all you can do with the scope. There is nothing else you can do. हाँ ये भी गार्ड बार चार आगे बाहर निकलेंगे. अभी आ जाएगा. So you've got the guide wire. What we should do is just first let them each practice हाँ movement and हाँ movements, हाँ understand Yeah. these basic, very basic things, but with all the experience we have, the most important thing in doing ERCP. ठीक है ना, तो उसको करें. While you've got the thing in, you see your ampulla is moved again. Now this is, I'm not happy with that position. So I would bring it back to the way it should be. Try and bring it close to you and straight. I'm sorry. What are you going to do? Stop. What do you want to do? You want to bring it closer to You you. want to bring it closer to you. What options do you have? Sir, I have 2 options. First, I have to up the big beat Yeah. so that I can Yeah. You've done that. Okay, good. I can pull out. So now push the big wheel away. Push the ampulla away. Okay, yeah. Now use the other option. Yeah, because it's already a reduced position, so you're not getting that much, and obviously this is also a dummy, but fine, you understand that. Just bring the ampulla again close to yourself. Good. Now I want the ampulla a little bit more centered. What are you going to do? So you did not. All you needed to do was just move one way or the other. Yeah. That's it. So you've got it a little bit more centered. So you understand this movement is actually affecting the ampulla. So you know that the big wheel का ये function है, ये हो गया. What does the small wheel do? The small wheel, just like we are moving our body, the same movement with the small wheel So forward. just do it and see what happens when what we do. नहीं it's other way around. वो right वो है, right is that movement, right? Okay. This is dial left is there. But you see, you have यही है ना चार. हाँ हाँ. That's all you can do. But these movements actually are very important when you're dealing with a difficult case. Straightforward case is fine. But sometimes when you put in a difficult stent, you have to do pull back, big wheel up, elevator all at the same time. Okay, so you're now doing difficult cases, difficult strictures. The same thing applies. Nothing changes except that you're using the combination rather than quite often just using this pushes your scope, if you look at it, once you've got your scope in the right position, just turning one way or the other with the shoulder, now the other way, it will also push your cannula in a little bit. So you have another way doing it. So you have multiple, these limited movements, but different combination can be used for different patients and need. The standard straightforward stenting, you don't need anything, you just can elevate. Use the elevator, big wheel, and you can get it. I try not to use elevator as much as I can because of the damage and because of the time that it takes. And once the elevator gets damaged, That's the it. scope never is the same Yes, when they repair it, for us at least. Okay, so you've got that concept. You have the next person come in, take the cannula out. Can we break for lunch? Okay, we'll break for lunch. We'll have cannula निकाल दो, scope को इसी position में रहे, lights off कर. I don't want struggling. We'll do some homework on this later, and then we'll try and see if we can use this concept. But you guys, listening to your experience in the units you're coming from, you really don't need so much of getting to the duodenum. That's not a problem here with you people. It's more of positioning of the ampulla, which is what I have to do. नहीं लेकिन I think I still find a lot of my trainees, in spite of the fact they've done quite a lot of, they end up in the fundus. मैं इसलिए बोल रहा था कि we will be when we go in the live cases, Yeah, it will be much better to show. Exactly. You can show this. It's a bit difficult one. And it's not live. You can't. It's not getting हाँ the जी, same. same feel no.
But I will work on this. वो जब वो कर रहे होंगे ना, हाँ हाँ, 3-4 दफा करेंगे तो that becomes हो a सकते हैं। हाँ, लास्ट टाइम भी हमने जब उसको वो किया तो फिर आई थिंक वी ऑल्सो डिड समथिंग टू इट। हाँ हाँ, इसको यहाँ पे तो असल में इसकी, हाँ नहीं, अब क्वेश्चन करें असल में ज़रा सा थोड़ा इसको, हाँ अंदर ले जाए, स्कोप हाँ अंदर ले जाए। हाँ हाँ, ठहरे मैं आपके लिए एडजस्ट कर लेता हूँ। लॉक पे कर, थोड़ा सा सपोर्ट कर लें। दैट्स बेटर। हाँ ये जब ये जो किया आपने दैट्स बेटर। हाँ हाँ जी, आपको मैं बताता हूँ, ये जो है ना इसमें आप पकड़ लें क्योंकि इफ आई मूव तो इट विल मूव। तो अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ इधर पकड़ लें। 12 o'clock जो है ना वो आपका ये है ना, तो नॉर्मली आप यहाँ पे जैसे थोड़ा सा रिच सा नजर आ रहा है ना, तो यू गो इन डायरेक्शन ऑफ दैट। दूसरा जो आपका डायरेक्शन ऑफ कट जो है ना, वो जब आप कैनुलेट करते हैं तो आपका स्फिंक्ट्रोटोम या कैनुला जो होता है उसको आप 1-2 दफा से टेक इट इन एंड आउट ना, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, बिकॉज दैट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। तो योर कट इज अलोंग दैट लाइन। इवन लोग कहते हैं ना कि डायवर्टिकुलम के साथ कट डेंजरस होता है कुछ, इफ यू फॉलो योर मतलब गाइडलाइन ना, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप डायवर्टिकुलम के साथ भी स्फिंक्ट्रोटमी कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू आर इन द राइट डायरेक्शन ना। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको 1-2 दफा मूव इट इन एंड आउट ना, दैट गिव्स एन आइडिया कि कितना वो है, मतलब कि किस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि उससे आपको पता लग जाता है ना। और दूसरा ये होता है कि हमेशा जब भी आप कट करते हैं तो वो खैर आपको दिखा भी देंगे, यू ऑलवेज डू इट विद द टिप ऑफ योर वायर। नॉर्मली आजकल जितने भी वायर हैं ज्यादातर दे आर क्लेवर कट वायर ना, आधा इंसुलेटेड होता है टू प्रिवेंट डैमेज टू द ओवरहैंगिंग फोल्ड ना, तो आधे वायर पे करते हैं। तो उसमें भी जितना आप कम यूज करें वायर इनसाइड, तो उससे ये होता है कि आपका डायरेक्शन ऑफ कट इज वेल कंट्रोल्ड और एकदम जिपर इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि अगर आपका ज्यादा वायर अंदर हो ना उसके, तो आप लगाते हैं उसको करंट देते हैं एकदम सारा का सारा खुल जाता है ना। तो टू प्रिवेंट दैट इट यू डू इट विद द टिप ऑफ द सिंक्रोट्रोम ना, तो उसका मतलब वायर का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है पूरा नहीं वो करती है। हाँ ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। असल में वो हमने ज़रा इतनी मदद इसको यूज़ नहीं किया, लास्ट टाइम वी हैड टू रियली वर्क ऑन इट। हाँ आपका जनरली ये होता है कि आप टिल यू सी द पेपिलर यू गेट टू द सेकंड पार्ट ना, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं यूजुअली जो ही जरा सा अंदर जाता हूँ सेकंड पार्ट में आई शॉर्टन इट एंड गो इन ना, वो मतलब आप किस पे होता है, कभी कभार नहीं जा पाते हैं। हाँ आप जरा अंदर जाके करें ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा लीवे मिल जाता है, यूजुअली अप टू 90 सेंटीमीटर्स ना सेफ डिस्टेंस इन ना। सिर्फ एक ये करना होता है कि जब आप D1 में होते हैं तो आप जब D2 में जाते हैं तो अक्सर लोगों की आदत होती है दे स्टार्ट फ्लिकिंग द नॉब ना, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि इसका टिप इतना मूव करता है कि अगर आप जरा सा टाइट सिचुएशन में तो यू विल टेयर द ड्यूडिनम ना, मतलब परफोरेशन कर देते हैं ना।
नहीं, उसमें ये होता है कि आप जब D1 में होते हैं तो D2 की जब जाने के लिए आपको 4 o'clock पोजीशन में जाना होता है। D2 के लिए एंट्रेंस आपकी 4 o'clock पोजीशन में होती है, मतलब जैसे आपको यहाँ पे नजर आएगा ना, तो आप उस तरफ जाएं, देन यू गेट इनटू D2। वहां पे जाके तकरीबन 90 सेंटीमीटर तक आप चले जाते हैं, तो आप फिर राइट लॉक लगा के देन यू कम बैक अप। जब आप वापस आते हैं तो पपेला कम्स इनटू व्यू एंड इट कम्स स्ट्रेट एट यू ना, तो आप थोड़ा सा अप एंड डाउन वाले व्हील से एडजस्ट कर लेते हैं एंड यू home in on the papilla. By the time you get to 60 centimeters, you should be on fast with the papilla. Usually 60 centimeter is the right distance. थोड़ा सा बाद वक्त 55 पे भी हो जाता है, लेकिन if you are at 60, you should be okay. Sir, one of my teacher in Japan told me that while make the tip up and then right, and then हाँ, do shortening. Like first you tip up and then right. Like that is, मतलब जो भी होता है usually ये होता है कि आप right lock करके आप वो करते हैं and then you pull out। तो जब pull back करते हैं तो उस वक्त आप tip up करते हैं। हाँ, मतलब उससे बेसिकली इतना वो नहीं होता। दूसरा थोड़ा सा आप जब ये करते हैं तो यू मूव योर बॉडी टुवर्ड द राइट, हाँ, दैट विल गिव यू एन एडवांटेज। हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब ये जो होता है ना, ये मूवमेंट, इसमें दो चीजें याद रखनी। एक तो ये कि अननेसेसरली मूवमेंट्स आपकी ना हो, थोड़ा सा कुछ चीज के लिए झुके और वो हो ना। एक दफा आप पोजीशन अक्वायर कर लें, दैट शुड स्टे देयर, ठीक है जी। आप जो सटल मूवमेंट्स करते हैं ना, चाहे आप पूरी शोल्डर को मूव करें या इसको रोटेट करें, यू शुड यूज इट टू योर एडवांटेज, क्योंकि ERCP का सारा कमाल जो है ना वो यही फाइन मूवमेंट्स पे है। बाद वक्त अगर आपकी पोजीशन अनस्टेबल हो तो इवन ये अप एंड डाउन जो होता है ना वो भी आप लॉक कर देते हो, हाँ, लेकिन उसमें फिर आपको दिक्कत ये होती है मूवमेंट्स करने होते हैं, उसमें खासकर आप काम करते हैं, स्टैंड डालना हो या कुछ करना हो, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो उस वक्त फिर अनलॉक कर दिया करें। लेकिन अगर कैनुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो तो उस वक्त मतलब इट्स क्वाइट एक्सेप्टेबल टू लॉक इट। जी जी, फंडस में ये होता है कि आप वैसे ही पुश करते जाते हैं ना, आपको पोजीशन ये करनी होती है कि आप स्कोप को जो है ना राइट की तरफ स्टीयर करें, राइट, आपका जो राइट है ना, जस्ट स्टीयर इट टुवर्ड्स द राइट, और जो गैस्ट्रिक फोल्ड्स है ना, नहीं नहीं, आपका जो एक्चुअल टिप जो है ना उसको राइट की तरफ आप मूव करेंगे। जब आप स्कोप इंसर्ट करेंगे ना, अभी मैं इसलिए नहीं करता कि फिर वो दोबारा उसको लाना मुश्किल होगा इसमें, तो नॉर्मली जो आप जाते हैं ना, तो आप आम तौर पे लोग जो पुश करते हैं ना और ये ऐसे पुल करते हैं ना, गो इनटू द फंडस, उसको अवॉइड करने के लिए आप राइट की तरफ स्कोप टिप को मोड़ेंगे और आप जाएंगे, फॉलो करेंगे जो गैस्ट्रिक फोल्ड्स है ना, रू गाय जिसे कहते हैं, उनके डायरेक्शन में आप जाएंगे। तो उस पर जब जाएंगे तो वो खुद ब खुद ही आपको सीधा पायलोरस तक पहुंचा देते हैं। अगर आपका जे शेप स्टमक हो तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है, तो वो ये है कि आप उसमें फिर पेशेंट को थोड़ा लेफ्ट पे कर दें, लेफ्ट लेटरल पे कर दें, तो उसमें मतलब इट टेक्स यू मोर टुवर्ड द, हाँ जी, हाँ जी, वो तो सनसेट की तरह आपके उसमें लगते हैं ना, फील्ड में लगते हैं ना, जैसे सन हो ना और सेट हो रहा हो ना, तो वो जब सेट होता है तो आप खुद ब खुद ही, क्योंकि इट्स अ साइड व्यूइंग स्कोप ना, आप उसको ऐसे देख रहे होते हैं ना, जब सेट होता है तो आपका स्कोप सीधा उसमें चले जाते हैं ना। हाँ, तो आप एंटर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे नहीं नजर आता, आपको ऐसे नजर आता है ना, तो आप जब उसको टिप अप करेंगे ना तो वो सन सेट हो जाता है ना, तो यू गेट इन देयर। क्या चीज जी? हाँ हाँ जी,
मैं समझा नहीं आपकी बात थी। हाँ 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 जी। कैसे नहीं अभी भी ऐसे नहीं समझ। हाँ जी हाँ ठीक। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 नहीं तो वो तो आप खुद एडजस्ट कर सकते हो ना उसको। आप वो कहते हैं इसको बो कर लेना। बो का मतलब है कि इधर है आपका ये। हाँ बो का मतलब है वहाँ वो हाँ 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 निकालने जरा ना इसको बाहर निकाल इसको वो उससे निकाल लेना। अच्छा अब हाँ अब पुश करें आउट उसको। हाँ क्या हाँ जी हाँ नहीं वो तो होगा। जैसे अगर आपका कैनुला यूज करें ना स्विंग ये तो स्विंग टू टोम है तो स्विंग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना जब मैं ऐसे करूंगा ना आप निकाल लें बाहर बाहर निकाल लें। ठीक है नहीं वो तो फिर उधर वो कर देना उसको थोड़ा सा जो व्हील डाउन पुश करे कि इसमें एक मिनट सॉरी हाँ इसको हाँ दूर कर दे। हाँ 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 अच्छा इसमें अगर आप इसको ऊपर करना चाहें तो और निकालें तो इसको आप बो कर सकते हैं ऐसे। यहाँ से मैं इसको बो कर रहा हूँ ना नाइफ को टाइट कर दे। खैर आप उधर निकाल दें। क्या हाँ ये कर सकते हैं लेकिन देखें आप एक चीज ERCP में याद रखें मूवमेंट्स आपकी जो होंगी ना दे आर गोइंग टू बी फाइन एंड डिलिबरेट। ऐसे ऐसे नहीं होगा इस तरीके से आप कर रहे हैं ना ये मैंने आज तक किसी को नहीं देखा करते हुए ना। ठीक है मतलब आप अगर मूवमेंट करेंगे ना मैं आपको हाँ नहीं वो है लेकिन वो तो आप जो भी दिल करे करे लेकिन अब अगर मूवमेंट मैं करूंगा ना तो मतलब माई मूवमेंट्स आर गोइंग टू बी वेरी डिलिबरेट ना। और अगर मैं राइट लेफ्ट डायल भी करूंगा ना तो बी वेरी मिनिमल क्योंकि इतना आपके पास अलाउंस नहीं होती कि आप वो करें। अगर इतने मूवमेंट के साथ आप उसको रब करेंगे ना तो यू विल डिस्ट्रॉय योर पेपिला ना। मतलब नॉर्मली ये जो है ना इस तरह तो अब अगर इवन इफ आई मेक अ मूवमेंट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिलिबरेट एंड मतलब फाइन ना। ठीक है तो ये ब्रिज अप डाउन ज्यादातर आप जो है तो ये आप ब्रिज अप डाउन पे करते हैं या बाद वक्त आप जब इधर कैनुला रखते हैं तो आप अप एंड डाउन मूवमेंट यूज करते हैं स्कोप का। तो स्कोप के अप एंड डाउन मूवमेंट से भी आपको इट विल टेक यू अप ना इट विल टेक द कैनुला अप टुवर्ड द CBD। नहीं इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ यू डोंट नीड इट यू यूज एवरीथिंग टू द बेस्ट ऑफ योर एडवांटेज ना। जरूरी मतलब बात चीजें आप एलिवेटर से उठाएंगे बाद आप अप डाउन मूवमेंट से करेंगे। अब जैसे आपका जो अगर स्टैंडिंग कर रहे हैं तो आप दोनों यूज करेंगे मूवमेंट्स का तो यू विल यूज द एलिवेटर एज वेल एज द अप डाउन मूवमेंट ऑफ द स्कोप क्योंकि हर एक का अपना एक डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होता है ना उसमें। ठीक है तो हाँ मतलब कोऑर्डिनेशन तो काफी होती है इसमें ना। देखिए कैनुला डालते हैं कुल एक मूवमेंट में कैनुला पास नहीं करते आप लिटरली पहले उसको टच करते हैं पेपिला को। जैसे उनने वीडियो में दिखाया था तो वो आपने देखा था कि टिप के ऊपर वायर था थोड़ा सा तो उससे वो एक्चुअली उसमें पेपिला के उसमें जाते हैं ना ऑरिफिस में वहां से फिर आप आहिस्ता से एडवांस करते हैं। इट इज नॉट कि आपने ऐसे वो पेपिला है और आपने एक ही मूवमेंट में सारा डाल दिया ना इट डजंट इट शुड बी अटेम्प्टेड लाइक दैट क्योंकि उसमें आप ये करेंगे कि बड़ा मतलब ये नाजुक स्ट्रक्चर होता है और आपके ऑरिफिस भी बहुत छोटे होते हैं तो आप ट्रॉमेटाइज करेंगे अगर उसको एक ही पुश में आप करेंगे। आप बड़ा जेंटली उसको टच करेंगे एंड देन यू विल मूव इट अप ना। हाँ जी पोजीशन ठीक है जी जी कैसे नहीं वो तो आप इसको नीचे रखे रहोगे ना देखिए आएगा तो आपको बता आपको अभी बता देगा ना। देखें अब आ गया ना। आप उसको हाँ आपको टच करेगा हाँ अब जो है ना अब जैसे मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा दिस नेवर हैपेंस इन रियल लाइफ। इसको मैं यहाँ पे एंगेज करूंगा देन आफ्टर दैट आई आइदर मूव द अप एंड डाउन कंट्रोल ऑफ द स्कोप यहाँ से या इधर से मैं थोड़ा सा वो करूंगा
बाद वक्त अगर मेरा एंगल बराबर नहीं हो रहा तो मैं अपने असिस्टेंट को कहूंगा कि इसको बो करे, तो वो थोड़ा सा इसको पॉइंट अप कर देता है, तो वहां से फिर आप ऐसा सा वो करते हो कैन्युलेशन। इसमें चक्कर यह है कि अगर जनरली आप पहले वायर अटेम्प्ट करते हो कि वायर आपका आराम से जाए ना, इफ इट इज प्रोग्रेसिंग फ्रीली तो फिर आपका मतलब हाँ फिर आपका आराम से, जब आपका वायर फ्रीली जाए इट मीन्स कि इट्स इन द सीबीडी, तो उस वक्त आप कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करो ना। जनरली आप कॉन्ट्रास्ट पहले हम ये करते थे कि उसको डाल के फिर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते थे स्ट्रेट अवे ना, तो उसमें ये होता था कि हिट एंड मिस होता था, मतलब अक्सर तो ठीक भी हो जाता था, लेकिन आप सब म्यूकोजल इंजेक्शन हो जाए तो वो बड़ी मुसीबत पड़ जाती है, या आपने पेंक्रेटिक डक्ट में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर लिया, दैट इज बैड। तो जनरली आप कोशिश करते हो कि आपका पहले वायर से कैन्युलेशन हो जाए, उसके बाद आप उसको प्रोग्रेस करते हो। बाद वक्त ये होता है कि अगर आपका वायर वहां पे फंस रहा हो, अटक रहा हो ना, तो आपका अगर असिस्टेंट अच्छा हो तो आपको बता देगा कि सर स्टोन है या कहीं लग रहा है वायर ना, तो उस सिचुएशन में विद गुड स्क्रीनिंग आप मामूली सा कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हो टू गिव यू अ रोड मैप, उसमें पता लग जाता है कि हाँ जी स्टोन है या कुछ है जो कि आपके उसको प्रिवेंट कर रहे हैं ना, तो दैट इज यूजफुल इन दैट रिस्पेक्ट ना। जो आपका रेगुलर वायर डाल रहा होता है ना, अगर इट इज गुड He'll आप tell you. खुद करते हैं, जब आप सीबीटी में होते हैं ना, अनलेस यू हैव अ स्ट्रिक्ट और अ बिग स्टोन, द वायर गोज विद अ डिफरेंट फ्लो। व्हेन यू गो इनटू द पैंक्रियाटिक डक्ट, इट इज अ नॉर्मल पैंक्रियाटिक डक्ट, वो हाँ 2 to 3 mm ही होगी ना, तो वो वायर फंस के जाता है, खासतौर पे जब एंगल से जाओ, वहाँ पे वायर रुकेगा, तो टेक्नीशियन शुड नो कि नो सर, by and large good technicians are correct 8 out of 10 times. Immediately they'll say sir CBD, वो बता देते हैं, वो without से screening, हाँ without जी। anything. But obviously if you have fluoro, just put fluoro like Wakash said and put the wire and you'll see whether it's going straight or whether like Khalid very nicely showed that whether you are actually in the pancreas, you're in the pancreas and you turn around into a side branch, you keep pushing blindly, and you're obviously going to cause harm to you. मुझे तो ये बताएं कि इसको एम्पुला को स्ट्रेट करने के लिए, अपनी तरफ सही करने के लिए व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? डोंट टच एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम पॉल। Stop, freeze and tell me what options do you have to bring this ampulla facing Wakar? ताकि इस तरफ देखिए, ताकि देखें ना एम्पुला आपका स्ट्रेट हो जाए। आपके पास ऑप्शंस क्या है? स्मॉल व्हील, ओके गुड, व्हाट अदर? यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट, यू आर डूइंग समथिंग दैट्स मूविंग योर एम्पुला। हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। नो, दोनों डिफरेंट है। स्मॉल व्हील इज डिफरेंट, दिस इज टोटली डिफरेंट, हाँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मूवमेंट, जिसको आप लिफ्टाते ही नहीं हो केस करते हुए, कि देखो व्हाट इज दिस डूइंग, आई मीन ऑल ही इज डूइंग इज लुक एट मी, हाँ turn towards me, Dr. Abdullah, ampulla is gone there. Turn towards the other gentleman there, ampulla is there. You just ignore this beautiful movement. And to me, this is what we teach you there. इट्स अ फाइन आर्ट। Okay? These are things that have taken us a long time. Long, We were not taught like this. Long time to understand. द हार्ड वे। And you're getting it when you're starting, so you should be much better Than in we a are. few years than we are. So this is important, and you have to keep doing this. जब आपका कैनुला दे रहा होता है ना, you won't believe it even now when they're sometimes finding something that I want, I'm playing with it, थोड़ी सी और बेहतर position में है before it comes in. And I'm seeing just bringing it a little bit here. Up, this also sometimes left right is very important. Right left wheel is very important. So what we want you to do is, dummy, is to understand this. It's not about cannulating. नहीं तो इधर उधर जाते नहीं तो वो यही चाह रहा चक्कर है ना, चली गई कि वो हाँ क्या हाल है, मुझे वो वायर देना, पता चला वो वायर देने में उधर चला सारा हाँ तो कहने लगे अब आपने क्या किया, बजाय इसके कि आप ये देखें कि आपने किया क्या, आपका इमीडिएट नीचे डिरेक्शन स्कोप अंदर डालो, अब स्कोप आपने अंदर डाला, अब आपने पोजीशन बिल्कुल ऑल यू नीडेड टू डू वाज, एक मिनट ठहरो, मैंने ये किया, मैं वापस and that is what to me, and I'm sure Waqar, we both
एक दफा पोजीशन आपकी हो जाए, कीप इट स्टेबल एंड यू नो कि जो आपने किया है ना उसको अनडू कर दो। और अनडू कर दो। बिल्कुल आपने एक चीज उठाने के लिए यूं किया था, आप उसी को यूं कर दो, वापस वही आ जाएगा। जाना इसने कहीं नहीं, वो बड़ा स्टेबल होता है, पेशेंट्स स्टेबल होते हैं अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव टू ब्रिंग दिस एम्पुला क्लोज टू यू? नो, अवे फ्रॉम यू। आई डोंट लाइक इट क्लोज, आई वांट इट टू गो अवे एज फार एज यू कैन। या एंड पुलिंग, हाँ, यू कैन ब्रिंग इट। sometimes even this movement that you have, depending on what your position is when you've got the cannula in, you can also use that to actually help push the cannula. This also, because if the ampulla is like this and you're going this way, you can actually, it facilitates just advancing your cannula once you're in. So, or the same movements. ये जो आपका है ना, cannula अगर आपने डाला हुआ है, अब cannula अंदर हो, तो आपने ये किया तो ऑटोमेटिकली कैनुला थोड़ा सा अंदर, that helps. जैसे the advantage of this उनका is जो sometimes with the especially right left of इसका is when you're actually cannulating selectively इनका cannulating जैसे वो difficult CBD. वीडियो दिखा रहे थे ना डॉक्टर खालिद, उसमें एक दो चीजें जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू एनालाइज इट और हाउ यू अप्रोच इट ना। जैसे वो बाज पेपिला जो खासकर वो प्रोमिनेंट जो थे ना, ओवर एंड वो जो थे, जो ओवरलैप जो करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आप नॉर्मली स्कोप थोड़ा सा, वी वर ऑलवेज टॉट के स्कोप को थोड़ा सा खींचे, यू अ बिट ऑफ अ जर्क ना, तो वो जर्क से ये होता है कि इट पुशेस योर कैनुला स्ट्रेट अप, और वो वही बात होती है कि जैसे वो बता रहे थे कि उसको एस शेप्ड होता है ना, तो उसमें जो ही आप उसको स्ट्रेटन और वो करते हो तो वो फिर होता है। तो ये जो पुल बैक का जो मूवमेंट होती है ना, तो ये दैट डज द ट्रिक फॉर यू ना। तो ये चीजें मतलब सटल सी होती हैं, बट दे डू वर्क ना। I'll tell you, we all have our own ways. Once I've got tip here of the cannula, there are two movements that I do. I've got it here, usually pulling back scope a little bit. As I'm pulling back the scope, I'm also pulling back gently on this, on the cannula, just a shade. And it just slips. Just a little. And at the same time, my right wheel and left wheel wala jo moves my cannula a little bit on this side, and it usually just, the ampulla literally comes and takes your cannula in. What I generally do is I don't advance, and I know he does the same thing, I'm sure. You bring the ampulla close to you. That does the trick. That does the trick 9 out of 10 times. You don't advance the cannula in. एडवांस करेंगे तो वो इट विल गेट स्टक। यार वो जब रियल लाइफ में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ये आपने एंगेज करें, हाँ, एंगेज करके थोड़ा सा खींचे, एंड दैट डज द ट्रिक। Yeah, that's it. I try not to do this. I want the cannula to come and take the ampulla to take the pull it out, and it goes in. I ask my wife. That's typical. थोड़ा सा आप लेफ्ट कर दीजिए। pull back इतना मजेदार नहीं हो, but what we are telling you is that if you pull back, ये इसको थोड़ा सा जेल लगाना पड़ेगा, कहाँ है खत्म हो रहा है। एक मिनट। Really fast. But the movement that I do is this: you've got this, you pull back, and at the same time my wheel goes left. Okay, and just a little pull. So what it does is actually ampulla comes and takes the cannula, and it just gives me. I don't push it in. I've only got
this much of my cannula in. At that moment, I asked my technician, try the wire. Bring, he says wire is in. At the same time when you are When I've done this, I've got this position जो मैंने आपको दिखाया है, उस position में मैं हूँ, ठीक है, ये देखिए, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ, ये हमने मतलब आप सिर्फ थोड़ा सा अप एंड लेफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा निकाल के अप एंड लेफ्ट left it, not up, I don't know. But what I do is, whatever method you use, I feel that it's better if you allow the ampulla to come close to you when you've got the tip, like this. Rather than trying to force you away, you are likely to damage the ampulla more if you are constantly poking it. एक दफा डालें, but I think for you guys, this wire guided thing is excellent. Tip of the wire out, है वो का? हाँ बिल्कुल. That's excellent. I mean for anybody. I find it difficult. हमारी पुरानी practice है ना. पुराने सीखे हैं तो इसलिए हम लोग अपनी old habits die hard ना. तो वो but जब मैं फंस जाता हूँ तो I use the wire. थोड़ा सा tip निकालो. I want to go, and you need to, like Khalid was saying, you need to know कि आपने डालना किधर है. What is the site on the ampulla? So this is what happens. He's absolutely right. Anybody who's doing regular ERCPs and he's doing good ERCPs, without realizing he will, while he's waiting for everything, he's observing where he's going to go. What is, once you've sorted the position out, you're looking at the ampulla and seeing कहाँ जाना है. Usually एक ही जगह planning. Because you need to know sometimes, like you say, you have. I find the hard tip ampulla really painful. Little tip coming out, and you try and put anything in it, and the tip is actually not aligned. That is one of those difficulties. That's better. See, now you want to go where? You want to go here. So what I was saying was a little bit of left and a little pull back. And without anything else, my cannula is in. At this time, I'm not going to advance this in. I'm just going to ask my technician, try the wire. He says, wire in, sir. I let it go. Chloro, wire in, follow it. No dye injected. I would say, 8 out of 10 times? Yeah. Around 8 out of 10 times, nothing else is almost always. दूसरा चक्कर ये होता है कि इसे ना हो ना सर, इसे ना हो तो जैसे अगर मैंने ये ट्राई किया ना हो, now you're coming down to 2 out of 10, right? Then you come out and you see what is it that you're doing wrong. One of the problems, orientation. आप अपनी दोबारा पोजीशन को दोबारा ठीक करें. आप देखेंगे यार, have a look at the whole thing again. Take a little bit of wire out. थोड़ी सी टिप की आपने वायर को, you realize you need to go here. You just go up. I lift it with my big wheel now. You get trying to go up, trying to lift up. Peplotome को भी कर सकते हैं. अभी आप difficult में आ गए ना, आप उसमें bow भी कर सकते हैं. Sometimes you use bow like they showed. Then you have different techniques. Difficult में you can use wire, you can use bow. Right left तो आप already use कर ही चुके हैं. That's my part of my practice. Fix करके नहीं होती नहीं fix करके नहीं. Sorry, what do you? जैसे अभी है आप करने लगे. अब आप right left को ऐसे घुमाएं. यहाँ से ऐसे कर. ये यूं कर. Push to try and get the wire. जब आप अंदर चले गए हैं, कैमरा यहाँ है. राइट लेफ्ट आगे नहीं, इसको कोई फायदा नहीं होगा. अगर आप टेक्निकली सोचो तो आपको कोई फायदा नहीं. आपकी टिप तो अंदर जा ही रही है ना. अब इशू क्या हो रहा है कि या तो the ones that I get stuck with is that you've got a CBD distillery that's collapsed because ऊपर ट्यूमर है या ये पोस्ट ऑफ है, whatever it is, नीचे बिल्कुल collapse पड़ी है. So you just need to be patient. I think wire almost always gets you in. Wire की technique you've already seen. A little bit of wire out, aim at where the CBD should be, and just gently put the wire in. Once the wire is in, you take the cannula
just put the tip in, use the big wheel, bring your ampulla close again the same way, and try and see, ask your technician to push the wire in, advance the wire in. If the wire goes, great. If it doesn't go, then use the bridge. Wire guided हो गया, bridge हो गया. You can use different cannulas, but I don't have to do that in my practice, so I really don't. I know Wakar doesn't do it. ये सब चीजें खत्म हो गई तो अब आप needle knife में आएंगे ना, जिसको आप pre-cut कहते हैं. Pre-cut के 2-3 principles हैं. Okay, we don't want to go through it, but before you do pre-cut, you should be at least 90% cannula. Otherwise, you'll never be a good cannula pre-cut. So you need to do quite a few. We in our unit last year we did 900 in some cases. We have 97% overall success. All comers. That includes myself and 4 others. It's not just me. My presence maybe raises it a little bit because when they fail, then most of my cases are the ones that have been failed bad. But with this kind of success, Shahryar and Sajda have done, Shahryar has done over 1,700 years himself, maybe close to 2,000. I allowed him to do needle knife only 6 months ago. That also under my supervision. So now it gives you an idea. And they were very upset with me because I did around. Today their cannulation rate is almost exactly very close to what my cannulation. But now I'm happy because now they've got that concept, they've learned everything. Needle knife करने से होगा ये कि आप cannulation में interest भी नहीं होंगे, आपने 2-3 दफा certain experience के बाद is a different thing. I have been doing ERCP since 1991. And a lot of you did not even probably pass your medicine. Okay? Medical college in New So 1991 and today is 2015. It's 24 years of ERCP. Yes, I know. If I don't get into the ampulla within 3 minutes, max 5 minutes, I will not. Okay, because by that time I have tried everything. And sometimes just looking at the ampulla, I know I need to try a wire straight. Okay. But that's thousands and thousands of years. So when you go on the workshop, you look at someone. Foreign needle knife because sometimes I'll see the ampulla and but still we try. Steps weighing standard. You should understand why I am doing this because see what this is doing is actually taking me towards where is the CBD? This way. This is when you've got your ampulla, CBD should be somewhere here. Correct? You need to go there. So whatever makes it easy for you to go there is what you need to do. And you need to understand there is more than one way of doing it. My preferred way is that I let the ampulla to come and take the cannula rather than myself glancing the cannula. That's how I do it. And I find that in most cases it's very easy but for this we've been saying since morning, this position is very important. Just because you've seen the ampulla, don't try अपने यहाँ से डालो चलो चला भी जाएगा तो अब आपने distance अपना कर लिया तो फिर भी थोड़ा करीब है but I've seen a lot of people trying इतना दूर है slide तो थोड़ा वो करो अपनी position को try करें almost always थोड़ा सा pull करें थोड़ा सा push करें air निकालें one of the things that happens quite often is we have patients with ampulla ही नहीं मिला why do you think that happens? अगर एम्पुला नहीं हो और डॉक्टर खालिद ने देखा नहीं है तो मैं मान लूँगा but he goes in, he looks at it, he spends some time, washes the whole thing and finds it. I find X-ray very useful. When I have my right position, I have difficult ampulla, किसी ने बोला नहीं मिल रहा, quite often we just look at X-ray. I know I'm in the right position. So you just need to do this. Sometimes it's behind a fold, you need to lift fold, wash, make sure that it's clean. There's small
एम्पुला है नहीं नज़र आ रहा उस वक्त बिकॉज उसको फोल्ड ने कवर किया है, स्टार्ट लिफ्टिंग एवरी फोल्ड अराउंड दैट एरिया रादर देन गोइंग इन यहाँ पे भी और D1 में भी ढूंढ रहे हैं और हर जगह ढूंढ रहे हैं नहीं, स्टे where it's supposed to be and start lifting the fold, and quite often you'll find that it's under one of those folds. But it's time, patience and knowing what you're doing. His X-ray की position is very useful. I mean, you saw all the cases he presented, immediately you know that must be the correct position. सर एंटी फोम आप ज़्यादा यूज़ करते हैं? नहीं, I don't use. I'm very basic ERCPs. I don't use anything. Most of the things are not available. Glucagon we can't afford for every case or whenever we need. I use atropine, simple atropine. We dilute it with 9 cc and we get 1 cc. Usually 1 to 2 cc is the max. If there is a lot of peristalsis, bubbles don't bother you at D2 range. Bubbles are more of a problem when you're doing endoscopy. Okay, if you move the big wheel towards you, then what happens? It will come to me. Yes. So you need to just practice the right left and remember what Khalid was saying. Your scope is, the straighter your scope is, the better you get, the more useful the movements are. So when we are doing ERCPs, we are actually talking. Scope is here. I'm doing everything. Abdullah has been with me. Shahid has been with me. It doesn't stop. Whatever, phone भी चल रहा है, बात भी हो रही है, छेड़छाड़ भी हो गई, हंसी मजाक भी हो गया. Virus in cannula है, हम इंतजार कर रहे हैं, whatever. And that's basically because once you're in the right position and comfortable position, you keep that position. Sometimes in difficult cases it hurts because your hand is literally like this and it doesn't move. So you need to be like Vakar keh rahe the, once you're in the right position, stop breathing. सर ये पॉइंट जरा दोबारा ले लीजिए. देखो अब आपने किया ना, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो सिंपल है because this is easy. There are two options you have. You can either advance the cannula and go in where you want to go, but you know you're in the right position and you bring the big wheel close. It will take you in. Right What do I away. have to do? This one, either I move it or just big one is enough. Big one is enough for you, but what I use, I told you what I do, and I will show you when we do it in the live session, because that's probably going to be more. You probably understand it better. If it's a very easy open thing, put the cannula, thoda sa andar gaya, push the wire. You don't have to do anything. You just need to make sure that you're. This position is very important because nowadays we don't do diagnostic here. So almost always you'll end up doing something. Again, we'll have a difference of opinion. I do a lot more sphincterotomies than. What would be useful is, as when we start the actual build on the live patient, if Khalid can represent his talk, which will be on his presentation, I think that will stress the importance of Those are with us, तो वो तो हम करा सकते हैं. हाँ हाँ, तो वो ये कि मतलब उसमें just to press a point home. And what we will do is when we go on live cases, you get a chance to do not so much because it's not fail. The reason for keeping this is that you can do this. We'll also give you practice with stent exchanges on this, no problem. We can छह दफा करो, draw का सारी चीजें. लेकिन ये concept यहाँ से बन जाए. We don't want to sit with the patient and show you कि यार ये करते रहो या ये करके देखो. You want to do it but subtly without actually, because you don't have like a lot of time. I think जो actually हम जो लिवरपूल में जो कोर्स रन करते हैं तो इसका ये 2 दिन यही इसी पे मॉडल पे करते हैं सारी इंस्ट्रक्शन और make sure you are fluent in it. So you mostly do this. You don't use this. No, not for moving the ampulla. Does it? No, I use this for cannulation. The small wheel a little bit. But मूव करने के लिए जो आपका बिग व्हील है Or scope. और स्कोप पोजीशन है, स्कोप को थोड़ा सा खींचेंगे बाहर. You can really use तीन मूवमेंट्स आपके पास है ना. राइट लेफ्ट को आप यूज कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा केसेस में जरूरत ही नहीं पड़ती. आपका पुल बैक, आपका अप एंड डाउन एंड आपका मूवमेंट, ये तीन चीजें आपको. You will see the ERCP guys जितने भी है ना, they are quite often doing this. In fact, a lot of endoscopy, not only ERCP.
ERCP में क्योंकि आपकी पोजीशन ही होती है ना, तो आप ये क्वाइट ऑफन ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी आप देखेंगे कि आदमी को हिल गया, उसने बात की, फिर वो वापस ऐसे हो गया कि यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. Or in fact, I learned ERCP on the old fiber optic stores. उसमें ये होता था कि इसमें तो you are trying to the screen ना, तो इसमें छोटी मूवमेंट इतनी नहीं होती, उसमें हम ऐसे करते हैं. And then automatically you move with it and you would stay like that. आपने वो देखा ही होगा. मैंने लास्ट फाइबर ऑप्टिक ERCP बिलीव इट और नॉट कफ किया लास्ट वीक. I got stuck here. My system broke. उसका camera broke. I couldn't leave the patient. So I had a fiber optic scope. So Akram said, sir, I have got a fiber optic. I said, put it. I had not done it for many years. उसमें But प्रॉब्लम वो मैंने शुक्र अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ. ब्रिज बड़ा फ्लॉप उसमें बड़ा यूज करता है कैमरा. Therapeutic scope was मेरे साथ. T scope. We used to do a spectroscopy first with a standard diagnostic scope and then use the therapeutic scope for cannulation. हमने तो बस एक दफा में हो गया था, लेकिन ये Sometimes like this case, now if I move here, or if I do it, it's not better to do that. you can do it if you Whatever works. Yeah. whatever works for you. We're not saying that. देखिए ये मूवमेंट जो है ना, ये जो आप करते हैं, they are different than what you dial left. They are different and They are different. Different. So you use every subtle movement to your advantage. और दूसरा वही बात है कि आपके ERCP में मूवमेंट हमेशा जो होंगे ना, they are going to be fine and deliberate. ऐसे रैपिड मूवमेंट नहीं होंगे, क्योंकि रैपिड जो करते हैं तो they never works. So in order to make the direction upwards, you haven't mentioned the use of elevators at all. Upward what? The cannula? The cannula when you are trying to cannulate? Yeah, cannulates and going upward. You are, sorry, that is standard. Because if you don't, just leave it, push back. Don't use the elevator, just push the cannula down. Keep pushing. What's happening? So elevator, I'm sorry, we are assuming that that you would understand that without elevator you can't put the cannula. Elevator will not. No, that's obvious. But when we are going inside and when you were going in order to make the position right, I mean in that case, elevator helps to. You can use the elevator also to push the thing in. Okay, but most of the time you really don't need to. Okay, before what I can imply is like if your position is like you can get into the right position, ampulla just is very high and you just barely see. I know what you're talking about. In that case, you just bring a tip of the scrotum out, you engage the ampulla, and then you use elevator, and that just straightens out. That's what I. Yeah, you do use that stuff. But how often do you need that? It's like Very rare. not too much. Most of the time what we are emphasizing on is the common practice. What would cover up your 80% cases. 80% of your cases, these movements is all you need. These are the movements that you need. Even if it's ampulla, whatever is present. Ampullary carcinoma, what's going to happen? This ampulla will change into a big balloon thing. That's all. And it's usually, actually, if you're sensible and you don't rush, again, I think ampullary carcinoma is an excellent example of being patient and looking at where you're going to poke. They bleed. Not excessively, but they bleed enough to actually make the whole thing obscure. So before you poke, you need to try and go through and see where the opening is. But when you are looking at the ampulla and you just sit there and just periodic suction. When we do that suction, let it go, suction, let it go. Sometimes bile starts coming out. When you're suctioning the air from that water, that creating a little vacuum there and kind of pulling the bile out. So you can see that, especially in that ampullary masses, you can see where the bile is coming. And with those, trying to use the wire, that's what I use instead of cannula, because keep pushing it into a hamburger meat, you can just keep making holes with the cannulas. Again, if you can't see, I mean, obviously, again, I can't overemphasize the position that you have on the screen.
check the position on the screen. If you can't see the tumor involvement and you're not sure, look at your position and then you'll probably find out. You get the right position and then you can sometimes even blindly get into the the position is not right and then it doesn't work. So you can do that and you can, let's just go through the first round of movement and then what we do is we just tense them. Whoever is next. सबका हो गया. You put stents. बेटा उससे बोलो stents ले आए. हाँ बेटा और. Stent insertion set के साथ stent ले आए कोई एक size. 10-7, 10-5 doesn't matter. अब मेरे को पहचान है if you are the one who require my counselor उनके साथ जरा वो करना होगा वायर एक्सचेंज और जब ये स्टैंडिंग हाँ वो आइडिया आप लोग सब ये स्टेंटिंग की जो ये आप जरा एक्सेसरी से समझे हुए Are you all familiar with it? Yes. So ये दोबारा ये तो आप ऐसा करो स्टेंटिंग how you put that on and you want action insertion के टेस्ट हाँ वो एक बनी हुई है ऑलरेडी बनी हुई है ये गाइडिंग कैथेटर के इसको लोड कर दें ये इंट्रोड्यूस हुई बात है और स्टेंट का डायरेक्शन भी आप बता दें कि कौन सा if you look at the stent okay but anyway these are converted अगर आप इसको देखें इस एंड को दिस इज अ लिटिल स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस ठीक है और इसके जो है ना फ्लैप जो है या जो फ्लैंजेस है दैट इज क्लोजर टू दिस और ये थोड़ा सा इससे दूर होता है क्योंकि ये अंदर जाएगा लिवर के अंदर so you have to make sure you don't put that upside down so make sure that you put it in the right way तो जो बाहर रहना है वो पहले ठीक है तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और यूजुअली यही होता है जो स्टेंट्स ये कंपनी के बने हुए होते हैं दिस इज स्मॉलर विच गोज इनटू द लिवर एंड द बिगर वन इज स्टेज आउटसाइड मुझे आप अपनी वो भी बताइएगा कि हाउ डू यू जो लोग कर रहे हैं हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर टेक्नीशियन एंड व्हाट डू यू से हाउ डू यू ये मतलब ये इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट वी क्लोज द स्ट्रक्चर डिजाइन उसके बाद हम स्टैंड इसके बाद लोड करके डायरेक्ट स्टैंड लोड करने के बाद हम सेक्शन के सेक्शन के स्ट्रक्चर के क्रॉस कर देंगे ठीक है स्ट्रक्चर क्रॉस हो गया उसके बाद नहीं वायर तो ऑलरेडी हो गई वायर ऑलरेडी तो वायर के ऊपर चढ़ गया ना ये वायर के ऊपर चढ़ गया ये वायर के ऊपर चढ़ गया वायर पीछे नहीं आ रही स्ट्रक्चर को क्रॉस किया ठीक है उसके बाद हम इंसर्शन किट के अंदर गाइडिंग कैथेटर हम कंप्लीट फिर इसको क्रॉस करते जाएंगे जो कि स्ट्रक्चर को क्रॉस कर देंगे इसको पीछे खींचेंगे नहीं ये तो यहाँ खींच रहा है ना मैं यहाँ नहीं खींच रहा आपको लग रहा है मैं खींच रहा हूँ मैं इसको पुश कर रहा हूँ पुश कर रहा हूँ ठीक गाइडिंग कैथेटर क्रॉस कर दिया स्ट्रक्चर उसके बाद इसकी जो पुशर है हम इसको यहाँ से रिलीज़ कर देंगे रिलीज़ करने के बाद पुशर के जरिए हम स्टैंड को पुश करते रहेंगे जो कि स्ट्रक्चर को क्रॉस करना शुरू करें You all understand the assembly concept. Yes. You're railroading the stent over a guiding catheter. That's why it's called guiding catheter. Okay. उसके बाद क्रॉस होने के बाद हम गाइडिंग कैथेटर को पुल बैक कर लेंगे ठीक हम इसको विड्रॉ कर देंगे स्टैंड हमारा वहाँ पे प्लेस हो जाएगा One of the problems that you have when you see people struggling and the stent is not going up is because you are not actually coordinating these movements. The most difficult of strictures are made even more difficult because आपकी coordination ही नहीं है. You're not bringing the guiding catheter back as you're trying to push. It's all about railroading. Action and reaction. You need to bring that down. You're so scared कि ऐसा नहीं हो भारी सब निकल आए. It's a gentle movement. ये जैसे ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा
वरना आप कोशिश करते रहोगे, ये अगर एक जगह पे फंसा हुआ है स्टैंड नहीं जा रहा। एंड आपने एलिवेटर को भी सत्यानाश कर दिया है, स्कोप भी और पेशेंट भी, और यू कैन सी it's not going. It's not going because you're not using a simple technique of pull back and advance. Pull and advance, pull and advance. These go together. आप उसकी लैंग्वेज अपनी कोई भी बना लो टेक्नीशियन से. I don't have to have a language with Wasim. We understand each other now. Telepathy. He knows what I'm going to do. I know what he's supposed to do. I know he'll do that. So we don't quite often we don't even have to talk. ठीक है? Release is all I tell him. And he, in fact, he tells me, कर दूँ. You know, or vice versa. So आपकी इतनी understanding होनी चाहिए with your text that they should know what you are going to do or what you're supposed to do, and I should know what he's supposed to do. It's I can't emphasize more. You don't have somebody next to you who understands what you're doing. Sometimes you're going to be stuck. I have been stuck, and it's a nightmare. You can't do it by yourself. Remember, I may be the best ERCPist there is. You give me somebody who doesn't understand how to push and advance and pull and all that stuff, and he does something wrong, I'm done. Okay, so basket opening, closing, full opening, थोड़ी सी आपने कहा ओपन बास्केट, अगर नया बंदा ठक करके उसने खोल दिया, ऊपर एक छोटा सा स्टोन था, नीचे एक बड़ा स्टोन था, बास्केट आपकी फंस गई. अब किसका फॉल्ट है? आपने उसको थोड़ी बताया कि ओपन बास्केट लिटिल बिट, मेक श्योर ऊपर एक स्टोन है. आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, स्टोन इज वेरी बिग. वी टॉक ऑल दिस, ही नोज, एंड ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो स्टेंटिंग का मैंने जो लोगों को फंसे देखा है, उसका वजह सबसे बड़ी ये होती है कि आपकी जो ये जो टेक्निक है ऑफ पुलिंग बैक एंड एडवांसिंग, आप उसको यूज नहीं करते. As long as you do that and you understand that, make sure that your attendant knows, your technician knows कि कौन सी साइड ऊपर जानी है. ठीक है ना? The stent has slightly more narrow and tapered end that goes in. ठीक है? And obviously, and that's important. Otherwise, अगर आपने sphincterotomy नहीं की हुई, again that's something that we haven't discussed. I'm sure I'm the odd one out maybe. I do more sphincterotomies than recommended. All my stents are placed after sphincterotomy. We are a teaching center, so once I've got access, I do a small sphincterotomy, and that's the only time that I do an incomplete sphincterotomy. I won't do full, just so that if my junior loses the access, I don't have to go through all the things. So I then tell them to play. I don't have a problem as long as I know I can go back in without any problem. Because once you've played with the ampulla and you come out, मैंने आपको सब कुछ डाल के दे दिया और गलती से आपने गड़बड़ कर दिया, निकल आए, अब वो ampulla can sometimes be very difficult to get in. So that's one of the reasons. The second reason I feel is, and I don't have any study to support it, is that I feel that my patients, my stents need or stay much longer if we do a sphincterotomy than if we don't. There is drainage from the side that continues, so even if the stent gets blocked, I feel that there is some drainage that continues from the side. But that's anecdotal, that's what I feel. I may be totally wrong. I don't do incomplete. No, I don't use balloon at all without sphincterotomy. There was somebody. No, I don't use balloon. Introducing, you put on this one in the ampulla at all. inside. There was a time when it came and it was shooted out because there was high incidence of pancreatitis. I was just told only a few months ago that there was apparently some suggestion
suggestion that you could do a sphincteroplasty without doing a sphincterotomy. There is this fear that sphincterotomy would increase the risk of perforation. We have now done over 800 sphincteroplasties. You are crossing this Probably one. reaching I think and our experience is very clear. We have not encountered a single perforation in any of our patients, and I don't understand why I only use balloon sphincteroplasty after I know that I have not been able to remove the stone. Sometimes big stones come up. We all have had that experience. So I do a good sphincterotomy. I try and take the stone out otherwise, and when it doesn't, then I do a sphincteroplasty. In very small number of cases, I would actually go in saying, oh, I have to do a sphincterology because the stone is very big. But more than often, I've spoken to a lot of people internationally also about this point. This is something that's close to my heart. And you know, you have to do a good sphincterotomy. There is no such thing as half a sphincterotomy. You have to do a good sphincterotomy, and then you attempt removal of stone. You fail. That's when you. Who is the hands-on? आपने करा स्टेंट डालो ना इसे, अब स्टेंट अंदर डालो इसको. दूसरा चक्कर ये ना कि sphincterotomy before sphincteroplasty. मैं आप when you start I'll be. ये ब्रिज जब हम स्टेंट रिलीज करते हैं, अप करते हैं, फिर थोड़ा सा पुश करते हैं, तो अक्सर वो डिफिकल्टी होती है स्टेंट डालने में, ब्रिज का मैं करता हूँ किसी तो जब उसको अप भी करना होता है, स्टेंट को ऊपर अप भी करना होता है, जब आप अप करते हो जरूरत नहीं पड़ेगी. ज़्यादातर केसेस में जरूरत नहीं पड़ती. वो आपको ज़्यादातर केसेस में जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए ना, जो आपको हमने 4 right left up down movement बताए, this is all you need to do anything. Elevator or bridge, you should try and use as little as possible. Nobody is going to tell you this internationally. They don't have an issue with this scope. We have an issue. आपके पास 1 होगा, 2 होगा, ठीक है ना. बहुत सारे यूनिट में हमारे पास we have 6 or 7 ERCP scopes, but still not enough. ठीक है. इसमें स्टैंड लोड करके स्टैंड डालना. स्टैंड अंदर डालना. दूसरा जो sphincteroplasty और sphincterotomy का जो concept है कि whether it causes a perforation or not, you have to compare it with episiotomy. अगर difficult labor हो, so you save a tear by doing an episiotomy. The same concept applies to sphincteroplasty. If you do a sphincterotomy before doing a sphincteroplasty, especially with CRE balloon, then it saves you a perforation. Okay, you can do 2 ways. I mean, I think, we just want to go straight. Otherwise, you can actually put a cannula, put a wire, and then load everything. But see if you can do it like this, and we load. I think one of the points Vakar made, which is very valid, is what you just did. देखो इसको जब आप pull back करोगे, ठीक है, ये अंदर आ गया. अब अपने एलिवेटर को दबा दो, ठीक है, लॉक हो गया. अब ये जब ये आएगा तो ये नॉक कर रहा है. जब नॉक करेगा तो आप इसको थोड़ा सा उठाओगे, इसको अंदर डालोगे. अब इसको आप उठाओगे. यू हैव दी रादर देन जैसे वकार साहब ने कहा कि जेजिनम में चला गया. Do you think your scope position is good? Not for stenting, absolutely not, and even otherwise. यहाँ पे तो ठीक है, प्लास्टिक है. हाँ, ये तो थोड़ा सा. What are you going to do? So, what options do you have? So just discuss. I think that's very important. I can use big wheel as well as I can pull back. Pull back. Yeah. ठीक है. So which one did you do? Both. Not both. इसको थोड़ा सा उठा ले, what gist of it. नहीं, देखिए ये चीज़ कॉन्सेप्ट के लिए, ये करने के लिए नहीं है. You have to understand. अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया है अप डाउन का और राइट लेफ्ट का घूमने का, then the dummy has done its job. Because I can't teach you this on the patient. I won't have 1 hour to teach you कि जी अब आप ऐसा करो, अब इसको करो. No, sorry, patient के अंदर we can't do. And that's the idea of having it. Ready? चलो, टाइम वाला सब नमाज पढ़ने के लिए. चलो यहाँ पे कौन है? तुम वहाँ पे तुम यहाँ पे. Vakar, I'll be back in 20 minutes. We just finish off one case. Yeah.
स्कोप का पोजीशन थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, इधर से जरा मशीन एडजस्ट, अब सही हो, अब सही है, ठीक है। हाँ किधर है? हाँ हाँ या अच्छा, इसमें ऐसे करें, आई थिंक दैट्स द होल हॉल। इसमें पहले कैलिब्रेशन करें, वायर एक्सचेंज करें, देन उसके ऊपर स्टैंड। हाँ वो बेहतर है, ठीक है। पूरा स्कोप निकालना, वो ऐसे करें कि वहाँ से स्टैंड निकाल लेंगे, यहाँ से निकल सकते हैं। जब आप डालेंगे ना स्टैंड, ठीक है, आप अभी स्टैंडिंग करें ना, हाँ वायर भी है साथ। वायर आपका यहाँ से निकलेगा ऊपर, वो जैसे पकड़ लेंगे, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, अभी आप स्टैंड लोड है इसमें, अच्छा अभी आप पुश कर रहे हैं ना, तो स्टैंड अभी सामने नहीं आया है, ठीक। अब आप जब नॉर्मली ऐसे होता है कि जब आप पुश कर रहे होते हैं तो आपको स्क्रीन पे जब आपका स्ट्रक्चर हो ना, तो स्टैंड का जो ये है, इसका जो इसमें ये गाइडिंग कैथेटर के ऊपर 2 मार्क्स होते हैं, मेटल वो टिप्स होते हैं ना, तो वो जब आपका स्ट्रक्चर से ऊपर हो जाता है ना, तो फिर आप उनको कहते हैं कि रिलीज कर दें, ठीक है। एट दैट टाइम यू रिलीज इट। या जब आप अगर स्टोन डिजीज हो, उसमें आप रिटेन स्टोन हो, उसके लिए आप स्टैंड डाल रहे हैं, तो व्हेन यू सी दैट मेटल मार्कर इन द CBD, मतलब हाई CBD में ऊपर देख लेते हैं द टॉप हाफ, तो उस वक्त आप इनको कह देते हैं कि रिलीज कर दें, फिर ये यहाँ से रिलीज कर देते हैं। सर जो 7 फ्रैंक का स्टैंड होता है उसमें तो ये इस तरह असेंबली नहीं आती, वो तो सिंपल पुशर है, वो सिंपल पुशर, उसमें फिर हमने कैसे, उसमें तो कुछ नहीं करना था, नहीं जैसे स्ट्रक्चर का अपर एंड, इसमें तो हम देखते हैं ना कि वो असेंबली ऊपर हमें मार्क नजर आ रहा है, उसमें तो सिर्फ वायर होगी, उसमें तो मार्क नजर नहीं आएगा। वो तो आप जब पुश करेंगे तो खुद आपका जब वो स्टैंड ऊपर जाएगा तो उसमें आप पुश स्टैंड से ही आप मेजरमेंट कर लेते हैं, कंट्रास्ट डाल दे लेते हैं, देख के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, उसमें तो ये नहीं करना पड़ता। इसमें से अच्छा जो अब जो हाँ ये वाला मार्कर है, ऊपर वाला मार्कर, ये जब स्ट्रक्चर से ऊपर चढ़ जाए, हाँ स्ट्रक्चर ये मेटल कितना सर, मतलब इट शुड क्लियर द स्ट्रक्चर ना, हाँ now you can't actually imagine, but when you see it above it ना, then you ask them to release that। मैंने रिलीज कर दिया। अब ये अच्छा, अब इसका जो है ना, इसमें 2 मूवमेंट्स आपने कर लेते हैं और ज़्यादा बोला, एक जो है ना आप इसको ऐसे पुश करेंगे, ठीक है, और फिर इसको आप ऐसे करते हैं, ऐसे जब पुश करेंगे ना यहाँ से बड़ी व्हील के पीछे नहीं, ये मैं एलिवेटर आप करेंगे, ठीक है। एलिवेटर से जब पुश करेंगे, जो एलिवेटर को आप रिलीज करेंगे तो आप यहाँ से इसको वो करेंगे, एंड एट द सेम टाइम यू यूज द अप एंड डाउन कंट्रोल, देन यू यूज द एलिवेटर एंड द अप एंड डाउन कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, एलिवेटर अप डाउन पुश, हाँ अप डाउन पुश, और अगर आपने ज़्यादा इसको वो करना हो, पुश देना हो, तो आप यहाँ से पीछे से इसको पुश पुल करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो दैट हैमर्स इट अप स्ट्रेट। हाँ तो एलिवेटर ऐसे, फिर आप ये, फिर आप इसको यहाँ से वो करेंगे तो इट विल गिव इट एन एक्स्ट्रा किक, ठीक है। तो एक हैमरिंग इफेक्ट होता है इसका, हाँ ठीक है, ऐसे एलिवेटर से, हाँ नहीं एलिवेटर, फिर आप पुश कैजुअल अंदर वो करेंगे, पुश करेंगे, फिर आप अप एंड डाउन यूज करेंगे। मीनवाइल वसीम आप उसको जो नीचे वाली शीट है टेंशन दे रहा हूं, थोड़ा सा टेंशन दे के इनको स्ट्रेच करो। इनका ये होगा ना कि इनने आप अपने असिस्टेंट को कहेंगे कि इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में रखिए, स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा फुल बैक हो थोड़ा सा, वो मतलब उनको वसीम को पता ही नोज व्हाट टू डू, लेकिन हर जगह वसीम मौजूद नहीं ना, वहां पे आपने अपने करना है, आपके जो असिस्टेंट होंगे ना उनको आपने कहना है कि इसको स्ट्रेट रखना है, क्योंकि अगर आप इसके साथ ये जाएगा ना फिर इट वुडंट डू एनीथिंग। माय असिस्टेंट आर कंफर्टेबल विद दिस, वो कहता सर मैं काट के करूंगा, मेरे पास असिस्टेंट है कि वो रिलीज करने वाले को छोड़े, आप काट के मैसेज चढ़ाऊंगा, काट के पेंट से कर यहीं से ये जो रिलीज करने वाला ना इसको काट के आगे शीट बना दो उसको, दूसरा सेपरेट भी तो आता है ना, व्यू ने लेकर सबसे आसान है
स्ट्रक्चर टाइट हो तो आपको अक्सर अच्छा खासा जोर लगाना पड़ता है। इस सिचुएशन में यूजुअली आपको मतलब फिर एडवाइस ये होती है कि आप उसको पहले डायलेट करें स्ट्रक्चर को, फिर ये डालें। उसको करीब कर लें, देखें फोन जा रहा ना बात का। अब इतने डिस्टेंस में आप स्टैंड बाहर निकालेंगे तो आपकी स्टैंड नीचे की तरफ चला जाएगा। हम इसको गेट क्लोज टू दैट मच हार्डर वर्क, उसके बाद हम ज़्यादा ऊपर वो करना जा रहा है एलिवेट करें तो बैलून जो होता है तो वो काफ़ी स्टिफली होता है और इट कैन गो टाइट स्ट्रक्चर और बड़ा भी की तरफ करेंगे तो प्रेशर से हो जाएगा। तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे काम ना चले फिर आप सिलेंडर भी बड़ा व्हील तो लोग वो तो उसका अपना स्टैंडर्ड वो होता है ना। अब तो बड़े व्हील तो बस ये ऑलमोस्ट तकरीबन बड़े व्हील से तो हमने अंदर जाना है ना, उसको यूज करना है। बड़े व्हील से प्रेशर पोजीशन कई दफा रिलीज के लिए आपको बड़ा भी लॉक करना पड़ जाता है कि अगर आप बिल्कुल उसके सामने लॉक कर देंगे। लेकिन मैं इसको यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, स्टैंड हमारा अंदर है, यहाँ से हमारा स्टैंड खूबसूरत स्टैंड है सर। अच्छा, स्टैंड का कौन सा साइड अंदर होगा और कौन सा बाहर होगा, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा? तो ये क्या किधर होगा, बाहर होगा? अच्छा, श्योर, यू एग्री विद इट? नेरो कौन सा साइड? हाँ, अंदर होगा। अच्छा, अच्छा ये प्रॉक्सिमल हो गया डिस्टेंस। अच्छा प्रॉक्सिमल डिस्टेंस को छोड़े, वो हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। ये कौन सा CBD में होगा, कौन सा उधर होगा? सर ये ड्यूडिनम में होगा, ये CBD। इसी तरह आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एक जवाब देता है, दूसरा B देता है, तीसरा C देता है, या होता है नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अच्छा, अगर आपने इसको आप स्टैंड के ऊपर या तो आपने ये पता कर लिया था कि कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है, आपने इसको स्टैंड असेंबली की वो करना है, ये निकाल लें डॉक्टर साहब। तो उसमें कौन सा कैसे डालेंगे इसको? वो पहले अच्छा, ड्यूडिनम वाला पहले जाएगा, ये ड्यूडिनम वाला साइड है, तो ये आगे होगा कि पीछे होगा? अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल ऐसे करें कि वो थोड़ा सा इनके साथ वायर एक्सचेंज
ये डॉक्टर नहीं देख रहे इसको, तो सेव ऑन रेडिएशन हैजर्ड ना, लेकिन इट इज योर ड्यूटी टू टेल देम व्हेन टू स्क्रीन एंड व्हेन टू स्टॉप स्क्रीनिंग ना। मैं कैलकुलेटर आगे लेके हर वायर में वो ताकि निकल आए ना, फोर्स से पकड़ना पड़ता है। इसको किस पोजीशन में रखना है इसको? अभी जैसे मैंने अभी तो न्यूट्रल रखेंगे। ठीक, अच्छा अब आप करेंगे वायर एक्सचेंज, ठीक है? अब इनको आप बताएंगे क्या करना है। आपने एक्सचेंज कर दिया, आपने ये करना है कि वायर अंदर रहे और ये बाहर हो जाए। आप इसको अंदर कर दीजिए, ठीक है? इस तरह नहीं, इस तरह किंग होती है ना, इस तरह नहीं, इसको स्ट्रेट नहीं करता नहीं, इस तरह नहीं, किंग हो जाएगा आपके अंदर करते जाए वायर की एक्सेसरी सारी किंग होगी स्ट्रेट। अच्छा इसको ये इसकी पोजीशन वगैरह में, अच्छा वो बाहर जब आ जाएगा तो अच्छा इसमें क्या करिए, अभी आपसे बाहर निकलेगा ना, ठीक है? अब आप निकालें इसको ऐसा, वो अंदर पास करेंगे, आपने इनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, जितना ये अंदर डालेंगे वायर उतना आपने ये कैनुलर बाहर निकालना है। मुझे इसकी तरफ दिखना है। हाँ नहीं कुछ वही यही सारी अब बात आपका है। स्प्रिंग बाहर आ गया तो आप गाइड वायर को लॉक कर देंगे यहाँ पे। अभी आपका कैनुलर अंदर है ना, अब आप निकालें इसको और वो आप अंदर डालेंगे ना, ठीक है? ये कैमरा आगे भाई, ये गाइड वायर है, मैंने गाइड वायर ब्रिज से लॉक कर दिया, ब्रिज से लॉक वो जब आ जाएगी बाहर नहीं बाहर आ गई ना वो गाइड वायर है। वहाँ से आ गया ना, बस इतना बहुत है। अब आप इसको आपने गाइड वायर को पकड़ना है, अब ब्रिज से लॉक कर दिया, ठीक है? अभी भी वो अंदर डालेंगे, आप इसको निकालेंगे, लेकिन आपने बड़ी ये लॉक ये ब्रिज से करेंगे, ठीक है जी? अब आपने लॉक कर लिया है, अब ये इधर लॉक ही रहेगा। अब आप ऐसा ऐसा ये निकालेंगे और वो अंदर करेंगे, एंड यहाँ पे चूँकि इस पर ज़रा सा ग्लेयर ज़्यादा है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ब्राइटनेस कम कर दें। ये जो है ना गाइड वायर, हाँ थोड़ा, हाँ अच्छा गाइड वायर स्ट्राइप्ड होता है हमेशा, आजकल जो है ना इसको या ज़ीब्रा कहते हैं या टाइगर वायर कहते हैं। इसमें एडवांटेज ये होता है कि अगर ये कोई सी मूवमेंट होगी तो आपको पता लगेगा। पहले ज़माने में ये होता था कि बिल्कुल प्लेन होता था, तो प्लेन में पता नहीं लगता कि आगे मूवमेंट कर रहे हैं क्या, तो हम बार बार उसको स्क्रीन करते थे। अभी अगर आप ये ना वो करें तो आप सिर्फ इसको देखें और आप निकालते जाएँ। आपने लॉक किया हुआ है तो नॉर्मली लॉक इस इट कीप्स इट इन ना, और आप डेलिकेट टच के साथ, मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ मूवमेंट्स अपने, तो आपने ऐसे लॉक किया है तो ठीक है, तो ये ऐसे ना, और मैं मतलब मेरा जो मूवमेंट होता है तो वो मेरे असिस्टेंट के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है, एंड आई यूज़ वेरी डेलिकेट लाइट टच ना, तो इवन अगर ये प्रॉपर लॉक ना भी हो तो इट स्टिल वुडंट कम आउट, इतना मतलब मैं इसके साथ है, हाँ मूव कर रहा है ऐसे। हाँ जी बिल्कुल, तो वो बल्कि सम टाइम यू कैन फील इट, क्या अगर वो ज़्यादा तेज़ आप पे जा रहा हो ना तो यू कैन एक्चुअली फील इट देयर, उसकी स्टिफनेस में फ़र्क आ जाता है, ठीक है? अच्छा ये जब मूवमेंट होती है ना उसमें आप फिर एक और ये मैं तो ये करता हूँ कि आप इवन इसको ऐसे वो कर देते हैं, ठीक है? लाइट लूप दे के ना तो उसमें ये होता है कि चांसेस, ठीक है आपकी फिंगर, हाँ हाँ नहीं इसको ज़्यादा नहीं ऐसे ज़्यादा टाइट नहीं करना, आपने ऐसे करना है कि बस लाइट से लॉक हो जाए ना, मामूली सा, हाँ 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 बस, तो उसमें ये होता है कि बिल्कुल सिक्योर हो जाता है ना। अगर आपका ख्याल ना भी हो तो इट वुडंट कम थ्रू ना, क्योंकि दूसरा जो लॉक होता है जी के ऊपर हम लगा लेते हैं, क्या वो जो लॉक होता है वो तो खैर आपको अगर वी लिप्स यूज़ करते हैं ना, हाँ तो ये तो मतलब आपको बेसिक सिखा रहे हैं ना, वो उसके लिए होता है शॉर्ट वायर जो अगर आप यूज़ करें, लेकिन ये चीज़ें आप यू शुड बी एबल टू डू इट योरसेल्फ एज वेल ना, मतलब आपको इतना डेवलप करना चाहिए अपना कोऑर्डिनेशन और वो ना। I am talking but my hands are not moving. हाँ मतलब दैट्स इम्पोर्टेंट, बट ये मेरे हैंड्स नहीं मूव कर रहे, बिल्कुल। अच्छा अच्छा नॉर्मली आप फिर इसको ऐसे लोड करके बाद वक्त इनमें स्टैंड के साथ एक कवर सा मिलता है ना जो इसकी ये फ्लैंजेस को दबा देता है ताकि वो इसमें स्टक ना हो। ये स्टैंड एक मैं आपको मैं बताता हूँ, ये स्टैंड है ना
इसका जब आप अंदर डालेंगे ना तो ये इसका कवर इसका जो ये तो यहाँ से चला जाएगा ना, लेकिन ये जो है ना ये उस पर स्टक होता है बाद वक्त ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे कवर सब मिलता है और ट्यूब्स होता है, तो आप उसको और ट्यूब को यहाँ पे फिट कर देते हैं तो ये उसमें से गुजर जाता है ना जब आप इसको पुश करते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो स्टक नहीं होता ये फ्लैंज, मतलब नॉर्मली इतना इट्स नॉट एन इशू ना, इतना प्रॉब्लम नहीं होता कभी। अच्छा यहाँ पे फिर आप जब आपके हाथ में दे देते हैं वो, तो यहाँ पे देन यू टेक ओवर ना, तो फिर आप इसको अंदर इंसर्ट करते हैं, आपका हाथ उसी तरह उंगली जो है तो लॉक्ड है, ठीक है, टिल यू गेट टू दैट प्लेस। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे जब ये पहुँचते हैं ना, ठीक है, अब आप डालते जाएँ, इसको डालते जाएँ। इस स्टेज पे अगर आपके पास वो ओवर ट्यूब होता है ना, तो आप इसको इसकी यहाँ से ऊपर ला के ना, तो ये इसको कवर कर देते हैं, ये जो फ्लैंज निकल रहा है ना, तो ये फिर कवर होता है इससे, तो फिर आप अच्छा अब आप इसको वो करें, ठीक है, इंसर्ट करें। आप जोर जोर से डालो, वो खुद ही स्ट्राइक करेगा आपके हाथ। हाँ वो वैसे इंट्रोड्यूसर जो इस पे मार्क लिखा हुआ है, वो अगर ये सिंबल नहीं है तो मैं वो टेल लगूँ ना, मार्क जो मार्क वाला इंट्रोड्यूसर है, ये जो इसके ऊपर मार्किंग है, हम निकालें इसको थोड़ा सा वो उस पे रेडियोलॉजिकली वो विजिबल होती है, मेटल टिप होती है, वो डायरेक्ट चला जाएगी, अभी इसमें करने की जरूरत नहीं, इसमें करने की आप जाते हैं। अच्छा देखें, ये तो आप वसीम खुद कर रहे हैं ना, अगर आपके असिस्टेंट को पता ना हो तो उसको यहाँ मतलब वो नहीं होना चाहिए ना कि लोल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑल नाइस एंड टाइट, अदरवाइज आपका इसको जाएगा नहीं, ठीक है। अब आप इसको हाँ अच्छा, अब यहाँ पे अगेन जोल नहीं आना चाहिए आपके वायर में, क्योंकि बाद वक्त होता है कि अगर लूप आ जाए ना तो एकदम सारा का सारा आपका जो असेंबली होती है ना ऊपर से सारी वायर निकल आती है। ये जो है ना, अब जैसे आपने यहाँ पे वायर को नाइस एंड टाइट रखा हुआ है ना, अगर इसमें आप जोल ऐसे डाल दें, छोड़ देंगे इसको ब्रिज को थोड़ा सा, हाँ अगर जोल डाल दिया ना तो वो दैट कैन बी डेंजरस ना, आपका सारा का सारा सिस्टम निकल सकता है ना, तो आप जब डालें ना तो इट शुड बी टाइट फ्रॉम हेयर एंड टाइट फ्रॉम देयर, तभी ये काम करेगा, अगर उसमें जोल आ गया तो फिर इट विल ड्रॉप डाउन। हाँ अब ठीक जा रहा है, हाँ हाँ अब आप जाते जाएं, वो बाहर है तो बाहर, हाँ ठीक है सही है, ठीक है, हाँ कीप डूइंग। अच्छा हाँ अच्छा, आप इधर से भी इसको पुश करते जाए ना, मैं निकाल नहीं हाँ कुछ नहीं, मैं सिर्फ स्ट्रेट करके मैंने ऊपर कर दिया ना, हाँ स्ट्रेट करके ताकि वो इजीली मूव करते। नहीं देखें, ये तो आपका आप इस तरह से नहीं जाएगा, आपका सिर्फ जोर से नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे तो आप जोर लगा लेंगे उधर से निकाल देंगे इस तरीके से, लेकिन ह्यूमन नॉर्मल बॉडी में नहीं होगा ऐसे। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे मूव करूँगा तो हाँ वो तो वापस आ जाएगा ना, फिर क्या करेंगे, हाँ और क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो आपने कर दिया, इसके साथ क्या करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर करूँगा, हाँ इस ऊपर से ये होता है ना कि ये आपका पुश करता है इसको, ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा रिलीज कर दें, अब इसको आप पुश करें इसको वायर को, इसको और ड्राइव करने के लिए फिर आप ये अप एंड डाउन यूज़ करें, फिर आप इसको वो करें, फिर दोबारा हाँ ऐसे, दिस शुड ऑल बी कोऑर्डिनेटेड। ये करता जाऊँ, ये दोनों को साथ ही कर सकता हूँ नहीं साथ नहीं ना, देखिए आपको मैं उसमें दिखाता हूँ सीक्वेंस में ना, आप इसको लगाएंगे ना, ठीक है, फिर मैं इसको ऐसे करके, अच्छा अब जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो इट विल ब्रिंग इट बैक, इसको फिर मैं हाँ ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे आप इसको फिर रिलीज कर देंगे, तो ठीक है, और अब इसको ड्राइव करने के लिए आप आगे वो करते जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे एंड फिर यहाँ से इसको यहाँ से हाँ, अब आप इसको ड्राइव करें, हाँ गुड, और नहीं आप हाँ जी जोर लग रहा है। स्कोप के साथ भी सर हम कर सकते हैं, कैसे, स्कोप के साथ, स्कोप के साथ भी आप थोड़ा सा स्कोप को बाहर खींचे तो
एक भी लपके चेक करके कर पुश जा रहा है ये बिग व्हील की मूवमेंट इसको डायरेक्शन को वो करने के लिए हाँ हाँ मतलब और वो भी करती है, प्रोपेल भी करती है। हाँ असल में वो स्टैंड इधर आ गया ना, डिप्लॉय करने के लिए इधर से आ गया ना। काफी जोर लग रहा है फिर मैं ये मेरा ख्याल है कि वो किंग हो गया होगा ना, और प्रेशर देखें ये जो है ना, यहाँ से अब इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, अब मैं सिर्फ ब्रिज से कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे और करना है तो आई कैन यूज़ द अप एंड डाउन कंट्रोल एज वेल। लेकिन हाँ इसको रिलीज कर दें। अच्छा अभी मैं इनको कहूँगा कि डिप्लॉय स्टैंड ना, तो डिप्लॉय का मतलब ये होता है कि मैं पुशर ट्यूब स्टैंड के अगेंस्ट पकड़ लेता हूँ ना, ठीक है जी। अब मैंने इसको ऐसे ही पकड़ा हुआ है और मैं ब्रिज रिलीज़ कर देता हूँ। अब वसीम जो है तो ये अपना सारा वायर और इंट्रोड्यूसर जो है गाइडिंग कैसेट ये पूरा निकालेंगे बाहर, और मैंने ये इसके अगेंस्ट पकड़ा होगा जो, हाँ तो फिर आप ये सब कुछ बाहर निकाल देते हैं, ठीक है जी। और अब आप ऑपरेशन करके लेप्रोटमी करके आप इधर हाथ डालें। चलें नेक्स्ट सर ओपन कर दिया ओपन कर दिया। इसका बड़ा कमाल है। हाँ सारा इसका है, इसका और अच्छा क्या हम इसको आगे भी कैसे कर सकते हैं? हाँ इसको ये इसी में तो ये मेन ड्राइविंग फोर्स आपकी ये है, ये असिस्ट करेगी। ये सारा ड्राइविंग फोर्स है और ये हैमर करने के लिए है। आप भी एक्सचेंज करेंगे? हाँ इनको मतलब पहले उसी से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं, लेकिन मैंने अभी बताया नहीं इसको किस डायरेक्शन में डालेंगे, इसको इसका ये जो एंगल है, इस एंगल को किस डायरेक्शन में स्कोप के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको हमेशा इसमें इस डायरेक्शन राइट। ये पहले से बैंडेड है ना, ये बैंडेड होता है। जो कैथेटर है वो तो बैंडेड नहीं होते ना, उनको तो हम पहले से कैथेटर बैंडेड नहीं है, स्प्रिंग टू डाउन से बैंडेड होता है। कैथेटर को हम अपने डायरेक्शन के मुताबिक बैंड करते हैं, मतलब ये स्कोप के साथ इसी डायरेक्शन। तो दोनों में कंडीशन तो मैं करनी नहीं चाहता। व्हील को राइट की तरफ, राइट ये लेफ्ट लॉक करें, राइट व्हील घुमा के लॉक कर दें। लॉक करने का तो लॉक नहीं कर सकता, इसको राइट से इसको हम तो लॉक नहीं करते, कहाँ पे लॉक करें, वरना ये आपकी बार बार पोजीशन मिस होती है। यूं ही होता रहता है कम से कम हमारे लिए तो बार बार आपका मिस होता रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं तो या लॉक नहीं करता। जब जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस पे करें, जब स्टेबल हो जाए ना फिर मैं लॉक नहीं करता। पोजीशन पर ठीक है, थोड़ा सा दूर करें इसको, बड़ा भी वही तो ठीक है। हाँ जी मैं वायर क्लोज करूँगा। ठीक, अच्छा इसका सुराख पंचर करना, इसका सुराख पंचर करना आगे बस। मैं आपको इतना आगे नहीं, अच्छा आप यहीं रहे, मैं वायर प्लेस कर रहा हूँ। अब मैंने वायर स्ट्रक्चर करना अब ठीक है, एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे बात? एक्सचेंज में ये कि मैं आई विल पुल एंड यू विल पुश एंड मोमेंट्स, हाँ मोमेंट्स जितना मैं मूव करूँ उतना आप ठीक है बोलेंगे तो कोऑर्डिनेशन चलिए रेडी, यू आर रेडी, जस्ट स्टार्ट। आपको कैरियर से बाहर निकलता है तो आप फिर लॉक कर देंगे, ठीक है। अभी आप बाहर निकलते जाए वो उसमें अंदर
हाँ वायर को पकड़ना। ठीक है, आप टेबल ऑफ अंदर लाइन इसको करें, पहले अंदर लाइन, अब लॉक करें, अब लॉक, अब ऐसा आप लाइटली डेलिकेटली और वॉच द स्ट्राइप्स ऑन द वायर, अब आपका वायर मूव कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये मूव करें तो आप फिर रेडियोग्राफर को कहेंगे कि स्क्रीन करें आपके लिए, ताकि आपका वायर स्लिप ना हो गया हो। अगर स्लिप हो जाए तो फिर आप ये सब स्टॉप करके दोबारा वायर को यूज करते हो। आप वो वायर फिर निकल रहा है। शाबाश। अब आपने ये पकड़ के उसको कहना है कि ये खराब है, ठीक है। वायर आपका निकल रहा है, नहीं आपको मतलब आप उधर देखें ना, इधर ना देखें, आप उसको लॉक रखें। Keep going. तो यहाँ से वायर इसको खींचते तो नहीं हो, क्या करते हो यहाँ से? नहीं खींचने से टेंशन देता है। अच्छा सिर्फ टॉप क्योंकि यहाँ से खेलने से क्योंकि अगर यहाँ से पुश कर रहे हैं सारी निकल आएगी, जितना पुश कर रहे हैं वो निकल। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरी वायर यहाँ से अभी तक हिली नहीं। अच्छा ऐसे बस आगे अगर फोल्ड हो गया फिर आप जब लाइव पेशेंट होंगे ना तो आपका वायर काफी सीपीयू के अंदर नहीं आपने होगा, कितना डाल दिया फ्लोर में, देखना कि आपने और गाइडिंग कैथेटर से ज्यादा लंबा होगा आपका वायर, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा जा गाइडिंग कैथेटर शुड बी वेल बियॉन्ड इट, तभी आपको एंकरेज मिलेगी। स्ट्रेचर भी क्रॉस कर लिया और स्टैंड स्टैंड अभी स्टैंड पुश करने के लिए मुझे यहाँ से मेरा रिलीज। अब आप इनको कहेंगे कि वो कर स्टैंड पुश खोल ले, स्टैंड रिलीज, अनस्क्रू। आपने स्टैंड रिलीज किया, पुशर से पुश करना है, लेकिन उन्होंने पोजीशन सही करा। अच्छा शाबाश। क्लोज करें इसको। इस क्लोजनेस के लिए मैं कहता हूँ ना कि अगर आपने बिग व्हील लॉक किया हो तो फिर ये दूर नहीं जाता, ये दूर नहीं जाता, वो फिर आपके पास रहता है। स्मॉल व्हील, बिग व्हील से तो आप अप डाउन करके इसको क्लोज करते हैं। आप लॉक नहीं करेंगे ना, वो तो आप यूज करेंगे। बिग व्हील लॉक नहीं यूज करेंगे तो हर महीने स्कोप आप नहीं बेचेंगे, रिपेयरिंग के लिए क्लोज करें प्लस। अच्छा अब यहाँ पे आप पहुँच गए ना, ठीक है जी। अब इनको कहेंगे कि डिप्लॉय करना है। हाउ डू यू डू दैट? तो आई विल जस्ट आस्क हिम डिप्लॉय। नहीं वो तो आपको कहेंगे ना, लेकिन क्या करना होगा? व्हाट डू यू टेल हिम टू डू? तो मैं कहूँगा सर कि स्ट्रेट हो जाएं, पूरा वायर स्ट्रेट करें, ठीक है ना, और डिप्लॉय करें। आप क्या करेंगे? मैं सर जो है तो ये जो है ना, ये इसको प्रेशर मेंटेन रखूँगा। अब अगर मैं, अब ये तो वसीम तो बड़ा एक्सपर्ट है ना, अब मेरे जैसे जाहिल आ जाए ना, मुझे आप क्या कहेंगे, क्या करें? सर क्योंकि आप ज़रा सीधा खड़े हो। हाँ ठीक है, मैं सीधा खड़ा हो गया। ये इसको स्ट्रेट इसको भी ऐसे स्ट्रेट कर दिया। नहीं हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरे एक हाथ है, दो हाथ है।
अब क्या करूँ मैं? मैं सर कहूँगा कि आप ये जो है ना ये अच्छा ठीक है ना सर, ये स्ट्रेट करें और भी स्ट्रेट करो और ये जो है ना ये इसको आप बाहर निकालें। नहीं सर, इसको बाहर निकालें। हाँ। और ये जो है ना मैं इसको मेंटेन रखूँगा। इसका आप उसको कहेंगे हाँ। कि टेक एवरीथिंग, नहीं एक मिनट, आप इसको पकड़ें, उसको अप्लाई करें, बाहर निकालें। टेक एवरीथिंग आउट, यस वायर एंड द गाइडिंग कैथेटर, ठीक है, एवरीथिंग आउट, राइट। आप अगर कहेंगे इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इधर मारेंगे तो वो करेगा तो वो बिकम डिफिकल्ट, ठीक है। टेक एवरीथिंग आउट एंड यू होल्ड ऑन टू दैट, ठीक है। आपको अपना काम करना है, उसको अपना काम करना है। क्योंकि चक्कर ये है ना कि वसीम तो नेचुरली सब करेगा कि एक्सपर्ट ना, वो तो अगर आपकी गलती को भी कवर करेगा, लेकिन आपने खुद अपना यू आर इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन ना, यू हैव टू टेल देम, क्योंकि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग ना तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, नॉट हिम। तो इसलिए हाँ जी, उसमें चक्कर ये होता है कि टेक एवरीथिंग आउट, ठीक है। अच्छा, मेटल स्टैंड जब होता है तो उसमें आप कहते हैं कि डिप्लॉय, उसमें फिर आपका असिस्टेंट होता है वो डिप्लॉय करता है। ये क्या कर रहे हैं? नहीं है, उसमें जा नहीं रहा नहीं है, खोल के करो। हाँ नहीं, दूसरा आपने उनको ट्रेन करना है अपने तरीके से। अब बात यह ना कि अब इनके साथ मैं इतना ज़्यादा काम करता हूँ कि आई कम हियर 3-4 टाइम्स अ ईयर ना, तो इनका तो मुझे पता है ना, बल्कि दे आर एज गुड और इवन बेटर देन माय ओन जो एंडोस्कोपी असिस्टेंट है ना। तो चक्कर ये होता है कि यू आर हियर, यू गॉट द लग्जरी ऑफ अ वेरी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल। अक्सर आपने अगर अपना सर्विस वहाँ पे सेटअप करनी है तो यू हैव टू लर्न ऑल दीस थिंग्स। तो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप हाउ यू कम्युनिकेट विद देम, दूर को पास करो ना, और आप अपना जो भी कम्युनिकेशन का तरीका होता है ना, टर्म्स यूज करते हैं वही एक्सटेंडेड यूज करें। ये वो कर रहे हैं कम्युनिकेशन, वायर एक्सचेंज एंड दैट्स इट। अभी मैं इनको असिस्ट कर रहा था, आई वाज डूइंग इट वेरी बैडली। You don't want a doctor to assist. I had to use my mouse to hold the wire. जो मुझे कह रहा था, I was doing it. तो ये जो आप पुश कर रहे हैं ना, तो ये जो ये कर रहे हैं, कई दफ़ा ये वायर को एक जगह होल्ड करके रखते हैं ताकि यू कैन स्लाइड द स्फिंक्टर फोम ओवर द वायर। So that's what he's doing. Now he's going in. थोड़ा सा बाहर निकाल के दोबारा जाइए, थोड़ा सा वो करके जाइए, दूसरे चल सीपीटी में नहीं फाइन। ओके रेडी, मैं थोड़ी और लाइक हो ठीक है रेडी, ठीक है वहाँ पे आप एलिवेटर के साथ होल्ड कर रहे हो। स्लो मूवमेंट जिस तरीके से भी काम करता हूँ। आपका काम है कि वायर मूव ना, अगर वो मूव हो रही है तो आस्क हिम टू स्टॉप। वायर तो फिक्स है, हाँ, वो एलिवेटर कई दफ़ा ना लूज होता है। हाँ, हमारे एलिवेटर जो है ना ये सही तरह होल्ड नहीं करता वायर को, यू हैव टू बी केयरफुल। वायर को पकड़े सर, पकड़ी गुड। याद रखो। स्टैंड पहले जाएगा इसके ऊपर।
एक्चुअली कोशिश ये करें कि एलिवेटर जो है ना वो आप ज़रा स्ट्रेस पड़ता है स्ट्रेन के साथ उसके ऊपर टू सेव द स्कोप. So you can use elevator, but to save the scope and keep it durable for longer time, just use the big wheel. So you can still move the stand, stay very close to the patella instead of using elevator. And क्योंकि एक दफ़ा elevator खराब हो गया तो फिर उसको fix करना. I think it's a good practice. अगर आप इसको बगैर उसके कर लो ना तो इससे आपकी प्रॉब्लम नहीं होती. For most cases you don't need to ज़्यादा सिर्फ elevator से थोड़ा सा अंदर डालने के लिए डाल, and then you can use the big wheel and in and out in that trust. In fact, if the tightest of the stricture actually the way stent goes up is by pulling the scope back more than anything else. So it's a combination of pulling the scope back, little bit of big wheel, and your technician actually pulling the catheter, and you just generally go back. अब आप एक काम करें, आप एलिवेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चले अंदर डालें इसको थोड़ा सा. अब कर दिया ना, अब कोशिश करें बिग व्हील से करने की अंदर. सिर्फ वो क्या एलिवेटर ना यूज़ करें, सिर्फ बिग व्हील से करें पीछे. बिग व्हील आपको जो है ना पुश करें और बिग व्हील टुवर्ड्स यू. Just wanted to show you that it can happen without using. It's even in this position, which is not the best of the positions for stenting. You're still able to push it just with the balloon. Push it with the balloon. Now you just pull the scope back a little bit, just a little bit, and see what happens. If it operates the way the patient would. Small wheel away from you a little bit. Small wheel away from you, and that sometimes can strip. मेरा ख्याल है ये जो है just do what pulling back does. थोड़ा सा pull back. You understand you can actually do it more than if you combine pulling back and up and up wheel. Really, for most cases, you really don't need to use the elevator. Traditional teaching is that thoda sa phir elevator, phir thoda sa phir elevator. That's the traditional teaching, and that's fine. You know, you've got standard stenting. But I think 10 French stent puts a lot of pressure on the elevator. थोड़ा करीब करना है उसको. What is happening is because after this, this is not being pulled back. Let me just pull this a little bit more. Now, यहाँ पे elevator को use कर रहे हैं. अगर इस position में आ जाए ना stent बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया. That's you are putting yourself in trouble. See, what I've done is what I told you. This is what would happen if you pull the scope back. This will bring it close, and then you should be able to cross. Correct? You see, there is no communication. You have a new tech who doesn't understand you. You don't understand him. You've not communicated with him. You need to understand. You say, यार मैं अब आप थोड़ा pull back करो. Guiding catheter pull back करो. Stent अंदर डालो. तो आपको एक वो तो होना चाहिए ना. ठीक है ना? Why don't introducing catheter pull करना? मैं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल करीब ले. आप भी तो कुछ करें. सर वैसे तो मैं चाहूँगा कि करीब आ जाए. नहीं करीब मैं आपको कर देता हूँ, कोई मसला नहीं. करीब मैं कर दूँगा, लेकिन करीब का इशू नहीं है. कह रहे हैं आप. This is almost as good as it's going to be. ठीक है ना? So you need to just keep going. You're doing well. That's done. Okay. Now what do you do? Flanges के बाद, then I would tell him to You got take flange everything there out. where you were. Are you happy with the position there? Not really. Why not? You want it? I mean, I'm not too pushed about it, but yeah, but fine. That's okay. Fine. That's reasonable position for me. That's fine. Your stent is in position. Now, what command are you going to give him? What are you going to take everything out? Take everything out. Everything out means the introducer and what do you do? Wire. I would press it on. अच्छा प्रेशर तो नहीं. Yeah. चलो. नीचे स्टैंड नीचे लटका हुआ पूरा. हाँ? नहीं पोजीशन फर्स्ट क्लास है, तो मैं पुल कर रहा हूँ ना थोड़ा. ठीक.
So this stent is fine. I mean, you can. What you were saying is you want it up to here. Yes. If it's up to, it's a little bit out. I don't see much of a difference, but this is okay. The idea, as I said, is to understand the concept really more than anything else. So you've got the concept, but I think the point I wanted to make was that if there is no communication between him and you, ये तो आप डमी पे कर रहे हो आसान है. If you are stuck and your stent is not going up and you are talking to him, forget it. It's not the fault of the stricture, it's not the fault of the scope, it's not the stent, there's nothing. It's the lack of communication. So ये वो चीज़ें ना जिन पे आप इतना जोर नहीं देते ना यार क्या important है मैं. If you have a good tech, he will actually guide you and help you through. दिखाओ. Stent दिखाना पहले यार. फिर ये वाला यूज़ कर रहे हैं. हाँ ये वाला. लेकिन वो तो येलो तो नहीं है. कलर तो डिफरेंट है. ठीक करना है. ठीक करना है. हाँ. लेकिन लग नहीं रहा था मुझे. ये हाफ की आंख से कमजोर हो गई. सर ये खुदा को माने यार वो तो वाइटिश लग रहा है. ये वाइटिश नहीं है. इसकी सबसे फुल लेके. Is the 3 French. There's one which is left in there. No, the thinnest one is the 3 French. No. French is this. Look at this. That is 3 French. No, this is there's no nothing smaller than 3 French. So then you see this is 5. This is 4. This is 4. And that is 5. 3, 4, 5. And you have this is 7. ये रियल लाइफ में ज़्यादा करते हैं यहाँ पे डमी पे करते हैं. No, this is not 6. This is 4. But this is straight. हाँ जी straight. अच्छा. ये 4 साइड हो गए. 3, 4, 5, 7. Yes. 3, 4, 5, 7. You are using 4. Mostly. Because this 3 is a big problem. Yeah. No, not a big problem. Big problem in the sense you need a smaller one. Yeah, you need a smaller one. And 4 would take 035. Take about sort of 035 gel. To be honest, we only have 5. I use 5. और दूसरा ये कि मैं if it's a temporary, ठीक है, I cut this length. Yeah, if it's just for prophylaxis, you may take it. No, I don't want it. Look, I want it to come up. Otherwise, you need another endoscopy to take it. That works well for us. So आप सब की लोग बात straight की. 2.5 है लेज़र. दूसरी वाली भी है 1.5 या नहीं? कैसे बोलो? बस ये 2.5 ही है. ये रख लेना अभी क्योंकि जब हम दिखाएंगे ये अपने पास रखो ना मैं तो खोल दूंगा. राइट सर. हाँ शायद पोजीशन थोड़ी सी बेहतर कर दो. चलो थोड़ा ये बहुत है. Actually the balloon is stomach is not completely balloon. Take your air out. But stomach is एक आखिरी रहेगा. बस ये काफी है. स्टैंडल वहाँ. Can you hear us? Yes, we can. I can hear you, but I can't see you. Yes, we can. Shahriyar, आप hello कर लो. Yes, we can. But we can't see you. अभी इसे आपका स्टैंड कराइए. You'll have to give us 2 minutes. Let me finish with Shahid. ठीक है Shahid, you maintain your position. The way you maintain your position is I think you can still manipulate this one a little bit. It's not only on a different position करके दे दिए सही. Now I think that's pretty good. जब आप इसको push करो, wire डालो अपना. Just put the wire. ये पैंट पे इसमें इसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. इसको निकाल के इसको आप विड्रॉ करें. यार उनको बोलो 2 मिनट ठहरने.
Dr. saying, can you please wait for 2 minutes? Okay. Pull back. No, take it out. Take it out. Take it out. Because Dr. Shahid Rasool is the last hands-on candidate who's doing ERCP on the dummy. So he's about to finish. Okay. Okay, we'll wait for the dummy. Just 5 minutes. Still in the bank. तो अगर ये बार-बार उधर जा रही है तो just take it out and go away. मीडिया एंड अब करो Yeah. Sharia, please, can you talk to the mic? Yes, Wakar, we can hear you. I think the patient has been given a general anesthetic, so I think it's probably better to proceed. Okay. चलो ठीक है बेटा चलें आप स्टार्ट करें